Hi everyone, are you able to hear me? Yes, sir. What about attendees? Not able to see people responding to messages there. Are you guys able to hear me? Yes, good evening. Saurabh here. Good evening, Saurabh. What about others? Attendees, we are seeing so many attendees there. Abdul, Ajay Tiwari, can we all see if you can just type so that we can? Okay, is typing not allowed there? I think that's disabled. That's why we are not able to see there. Okay, makes sense. The chat is disabled there. Okay. Anyways, first of all, thank you so much for joining in, everyone. If you have any questions, like always in each and every webinar, we have our Simandhar team in the Q&A window. Okay, and any questions, please put up in the Q&A window and instead of webinar chat, like chat is disabled for today. So if you have any questions, put up in the Q&A window and the team can keep responding to that. Okay, cool. Thank you, Nikhil. And thank you for confirming everyone. And I'll just take a quick introduction about what today's session is and give a glance about different courses. I think the theme is about getting into the big fours, and there are a lot of these courses which we are providing at Samandhar Education. So I'll talk about each and every course in detail, and also we'll take a lot of Q&A so that we can understand what is your mindset behind pursuing these courses as well. So let me just immediately confirm if you are able to see the screen. Yes, folks, is my screen visible to everyone? You can just put up in the Q&A window so that I can see if you guys are able to see the screen. Okay, thank you, Ankit, thank you, Hemant. Okay, so if you can see that, and this time I've taken it little differently because I thought I'll put up an Excel sheet and then explain, because there are different courses, different certifications, different examination bodies and all. Thank you, Jayashree. Thank you, Kasif. The Q&A window looks to be extremely being active. So thank you for responding there. Thank you, Ajay. Thank you, Jamil. Thank you, Vanita. Okay. Stop. Yes, please. So if we have this, these are different courses. What we have: CPA, CMA, EA, CIA, ACCA. These are the courses we normally recommend at Simandhar Education for people who are finance and accounting professionals, who all are BComs, who all are chartered accountants, company secretary and all. So these are the qualifications which we normally recommend, right? So if you can see that different courses, I try to explain that in a tabular format because there are a lot of issues and discussions and doubts with respect to each and every certification. So I did my best to kind of put that in the table and explain you how these all qualifications are. Now, if you see what is CPA, like we have in India, chartered accountants, US chartered accountants basically are known as CPAs. Like we have in India, cost accountants, US cost accountants are basically known as CMAs, which is certified management accountant. Like we have in India, tax return preparers, the US tax return preparers are known as enrolled agents. And like we have in India CIAs, in US also we have CIAs. So CIA is the only qualification which is global in nature. So we don't have CA Australia, like we have CPA Australia, CPA Canada, CPA Scotland, CPA Singapore and all. But for CIA, we do not have that. It's just a one qualification. It's a uniform qualification, right? The only body which kind of dictates CIA is Institute of Internal Auditors. That's the only body which regulates across the world. So you do not have CIA Australia, CIA Singapore and all. You have only CIA as a qualification. With respect to India or US and all, the content remains the same. It doesn't undergo a change. Now, if you see, like in India, we have chartered accountancy, which is of 20 papers and all, right? This is not the case in CPA. So if you see, CPA has only 4 papers. So same way, you see ACCA, like we have in India, chartered accountants. UK chartered accountants basically are known as ACCAs, which is Association of Certified Chartered Accountants of UK. So governing body, if you see for CPA, is AICPA and NASBA. So you have two bodies which are regulating the CPA profession, folks. AICPA is the one which conducts the examination, but it doesn't set the question papers because both the bodies cannot remain the same.
And NASBA is the examination body, so it conducts. So wherever your marks are being highlighted, it is actually shown in NASBA's website. So what is NASBA actually? It's a National Association of State Board of Accountancy. So NASBA is the body which regulates the 55 state professions. All right. So there are 55 states in the US. This is the body which actually regulates their profession and regulate the accounting profession of those states. So NASBA is the body which actually even issues the CPA license also. If you see the CPA license as well, the different state boards have outsourced all their activities to NASBA, and that is a body which actually regulates this entire stuff. In CMA, the body which regulates the US CMA is Institute of Management Accountants, the IMA. And then in EA, the qualification itself is issued by income tax itself. That's why EA is very popular. I've seen a lot of the students pursuing EA, and some of them are behaving as if there are no exams for EA. So whenever the slots are open, they jump in to write the exam. This is considered to be the popular qualification among all the qualifications. The idea behind the popularity is because this degree is issued by the US income tax itself, right? Unlike CPA, CMA, CIA, ACCA, which is issued by the private bodies and all, EA की मतलब advantage ये है, so that is issued by the income tax itself. The US government itself issue the enroll agent, so and that's what it is very popular. Then we have CIA, which is issued by Institute of Internal Auditors, and then you have ACCA, which is issued by ACCA UK. Now, what are the career roles? So where do the CPA, CMA, EA, CIA, ACCA works? If you see in CPA, normally the roles are audit, tax, and all those stuff. So they work typically in the audit, in the US audit, US tax. So how it is structured, folks? So there is the finance is structured into audit, tax, and FP&A, right? So every company has an internal audit, external audit. Every company has an taxation department also. The same way, every company has an FP&A function also. Then you have corporate finance, business finance, all those things. So typically CPA works across all these profiles, but basically the majority of the jobs of CPA are in US audit and US tax. Sir, why will a US qualification be popular in India? Because if you see that, though the chartered accountancy of US, but still it is gaining a lot of popularity in India. The reason is obviously because there are a lot of US based companies here in India. So if you see that there are EY, Deloitte, KPMG, RSM, then you have Grant Thornton, then you have Capgemini, Genpact, Accenture, Cognizant. So these are all the US based companies here who have set up their shops here in India. And obviously they would want to hire a talent which has the US accounting or US tax knowledge. And that's the reason why these people are being hired a lot. And you're seeing a lot of these profiles being hired for CPA. And typically the package, if you see, like I've written 12 plus LPA, and that is up to. So I don't want to kind of misguide here. So you might end up getting 8 lakhs also as a fresher starting salary. So 8 to 12 is the range typically. Don't go with misguided institutes where 15, 16 lakhs is not there. Typically IIMs also don't get that package. So I think they would be lying if they talk like that. So ideal salary would be around 8 to 12 lakhs. So if you're just a grad, I think 9 to 9.5 is what we have seen. If you're into big fours like Deloitte, EY, KPMG, typically they pay 12 lakhs and above. That's their standard. Sir, no, I am not a chartered accountancy. I don't have a CA background, nothing doing, because big fours don't discriminate. Do you have a BCom plus C Inter plus CPA? No. If you're a CPA, you are being paid at 12 lakhs per annum. That's their standard pay scale. Okay. Then you have for US CMA up to 8 lakhs. Typically the package starts for a fresher from 5 lakhs to 6 lakhs. सर 5 लाख तो हमको भी मिल रहा है बीकॉम करने से. द रीजन है सीएमए टिपिकली दे प्रोग्रेस फास्टर बिकॉज यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अंडर योर बेल्ट, and that's why tend to get real fast progression, and the exam is also two paper exam, that's all. So one of the easiest qualification among all of the five, right? Enroll agent, typically if you see 5 to 8 lakhs, though I've written 10 LPA because a lot of them have secured 9 to 10 lakhs since last 3 months. But normally the standard salary in the market is 6 to 5 to 6.5 lakhs for EA as well. CIA again 7 LPA and ACCA up to 8 LPA, but typically ACCA also get around 5 to 6 lakhs. Sir, what about those influencers who are talking 20 lakhs, 3,000 countries, 5,000 countries ACCA is recognized? Unfortunately, that are all good marketing strategies, but the recognition is what we want to end up seeing, that in India, do we have a job or not? And India, there is a job for ACCA, but the package is normally 5 to 6 lakh. That's all. Okay, recognition and all is secondary, because end of the day, हाथ में पैसे कितने आ रहे वो important है, and that is what it is, and this is the reality for all the qualifications. Okay, duration, if you see that, CPA tends to get completed in 8 to 12 months. CMA gets completed in 6 to 8 months.
and EA gets completed in 3 to 6 months. And then you have, if you see that CIA also takes lesser 8 to 10 months or so. And then ACCA gets completed in 3 years. So ACCA takes a lot of time because that's an average I've taken for a person who's pursuing BCom. If you have already completed BCom and all, you might end up completing in 1 to 1.5 year. But if you are just a BCom pursuing BCom first year or second year, then it is 2.5 to 3 years. So EA means, Monica, it is enrolled agent. So why do we talk it as enrolled agent? Because in the US, they don't like the, if you see the US citizen, when they are filing the tax returns, you have a representative who will file on their behalf and all. So EA signature is mandatory there, or a CPA signature is mandatory when they are filing the tax returns. So typically these are known as enroll agent. They are normally called as US tax experts. Okay, cool. So if you see that salary duration, if you see the books, actually there are only 4 papers for CPA, right? And then you have 2 papers for CMA. And in EA only 1 book. There are only 3 papers in enroll agent. And CIA also 3 books. ACCA have 13 papers. Again, I have said you, if you're a BCom and all, if you have completed BCom, then you have 5 papers exemptions. And if you're a BCom plus C enter, 6 paper exemption. So that is what it is. So you'll need to end up writing only 6 to 7 papers for ACCA. Okay. And we see that for CPA, there are only 4 books. So 4 papers are in CPA. First 3 papers are mandatory, FAR, audit, reg. And then the last paper have a discipline, right? So which is ISC, TCP and bar. We will come across all those papers and all. CMA, sir, why did they put only 2 papers? Because CMA, typically if you see, all are pursuing CMA. There are students also who pursue CMA. That's why what IMA thought that 4 papers will look very cruel. And that's the reason why, because BCom entry people also write, students and working professional. That's why they put only 2 papers in CMA. So never get confused between CPA and CMA. So if you see CMA have only 2 papers, it's less in content also because students and all are eligible. But for CPA, you need to be a graduate. So if you're pursuing graduation, you cannot write the CPA exam. If you're pursuing graduation, you can write CMA, you can write EA, you can write CIA, you can write ACCA. But for CPA, you need to be a graduate, or you need to be a graduation final year, right? Or if you have a 4-year BCom, then you don't need to worry. After 3 years, you can sit for the CPA exam also. Now see the subjects there in CPA. You have FAR, audit, reg, right? And then age doesn't matter, Monica. I think we had a lot of our alumni, like if you see that one of the alumni we had was, she passed in 52 years old, right? So when she passed CPA, she was 52 years, and we placed her in Oramus, right? So you can find her on LinkedIn also, Aparna, and it's also on YouTube as well. Okay. So age really doesn't matter. What matters is, are you able to present what you have acquired, right? So if you see that subject, I think physiotherapy and all those stuff, even if you are from non-accounting background also, you are eligible for CPA, CMA, CIA. You just need to do a bridge course and you can finish it off. Okay. And that is what it is. Yeah. So if you see that CMMA, then you have part 1, part 2. So part 1 is planning and analytics. Part 2, you have strategic management. So if you see that in CPA, FAR is nothing but your financial accounting reporting, which is US accounting, I would say. Audit is US auditing, like we have in BCom auditing. Then regulation, we have US tax. So regulation is nothing but which regulates, right? So regulation ka matlab hi law or tax hai. So if you see that US accounting, US audit, US tax, then in discipline, they have given bar, ISC, TCP folks. So if your love is accounting, then you select bar, which is business analysis and reporting, which is nothing but advanced accounting. If you like audit, then FAR audit reg is mandatory. You select ISC because you love audit, and audit is becoming technology. So that's why they have mentioned information system and controls. Sir, what if I like tax more? Then FAR audit regulation, and then you will select advanced tax, which is nothing but tax compliance and planning. Sir, which one would you recommend in discipline? TCP, obviously, because I'm a selfish teacher. I'd want the pass percentage to be obviously very high. And TCP is one of the easiest paper. It is a very small book with only 4 chapters and take less amount of time. Like, sir, if I talk more 40 minutes, half the people will go up because the attention span is very less. So that's why TCP is also very small book and you can easily study. And that's the reason why you can pass the exam also. So my recommendation will always be TCP. Please, sir, what if I'm not from US tax background also? Should I select TCP? 110% yes, because the pass percentage is always almost 85 to 90%. Okay. In CMA, if you see that the part 1 is planning analytics, part 2 is strategic management. It deals with more about planning, analysis, forecasting, and all those stuff.
right? And then in part 2 you have strategic management, which deals with ratio analysis, capital budgeting, and lot of cost management, lot of management. So people who are afraid of accounting, who don't like accounting, should select US CMA as their qualification if they want to go into planning and analytics. It's more about management accounting. If so, for an example, why Simandhar revenue went down, why Simandhar expense has gone up. So these are the guys who do the forecasting. They are the internal management experts. This is a black belt for management accounting, is the US CMA. Ideally, they will work. I'll show you where they work, right? So US CMAs typically work in FP&As, financial planning analysis, cost management, risk management. These are the profiles they work into. FP&A is their major forte. And sir, why CMA getting popularity? Because so many GCCs are opening up in India, global capability centers, which is nothing but US based companies are opening their shops here in India, right? And now that Trump is planning to put outsourcing tax, then though they will try to put entirely their captive only here in India. That means they'll open their subsidiary itself in India. Then though US CMA will go for a huge demand, because you would need FP&A people to forecast, to plan, to analyze. Who will be the person who will decide what is my cost and why will my cost be reduced and all, right? So that decision is normally taken by management accountants. Even if I want to fire people at my own company, that decision is also taken by an FP&A only, by a CMA. This is a qualification which takes you to CFO, because they are the ones who know the entire business, entire planning, and entire finance of the company. Typically, the business finance guys go into USCM. Then you have enroll agent. There are three papers: part one, individuals; part two, businesses; part three, representation. So, what is part one? EA has three parts, but only one book. So, part one deals with individual taxation, like my income tax. Businesses, part two deals with Simandhar tax filing. Part three is representation. That means I am representing on behalf of Simandhar with IRS. IRS is nothing but your US income tax. Okay, so I can fight on behalf of Samandar, on behalf in the front of the IRS. Okay, so that is the privilege, that's the power of enroll agents. Okay, then you have CIA essentials, internal audit. You deal with internal audit engagement, internal audit functions, and all. Then you have in ACCA applied knowledge, applied skills, strategic professional. Again, business tax, management accounting, all those things are covered. So ACCA, there is a skills, there is a knowledge level, there is a skill level, and there is a professional level. Knowledge level has 4 papers, skill level has 6 papers, professional level has again 4 papers. Material, if you see that, what we provide for CPA and CMA is Becker, right? In EA, we use FFA because FFA is there in the market since almost 60 years for EA. Becker have just started enrollage, and that's the reason we aren't taking Becker for some time. But for CP and CMA, Becker is the gold standard. As you know, we are the exclusive training partner of Becker. There is no other institute in India which is providing the Becker study material, Becker books, Becker software, and all. Sir, why we are talking Becker is like so big? Becker is there in the market since 70 years. If you type in Wikipedia, what is Becker? So guys, in the analogy, like in the US, if there are 2 lakh CPAs, 1,70,000 people have passed through Becker. They have maintained a pass rate of 95% since last 75 years. So there is no question only to compare Becker with anyone else actually. So that's why we became exclusive with them, because they are the best. There is no other player in CPA other than Becker. They are tied up with 3,500 companies and 4,000 universities in the US. And that's why they are considered to be the gold standard. And that's the material we use typically for CPA and CMA. EA, like I said, Becker have started recently, so we aren't taking their material, but we use FFA, which is one of the renowned players since last almost 45 years. And then for CIA, we use GLIME, and in ACCA, we use ACCA approved publishers like BPP. Okay. Eligibility, like I've already discussed, BCom people, and you need to have a passport mandatory in CPA. If you don't have a passport, you can't write the CPA exam. Sir, what if I don't have passport? Please apply. Tatkal passport apply karo. 1300 rupees, you're paying so much of money. So pay for Tatkal also. And apply for passport and sit for the CPA exam. CMA, you just need to be a 12th pass. Same for other qualifications also. But for EA, you need to be 18 plus, because you need to apply. PTN is just, PTN is like your tax identification number, and that will be given only when you are 18 plus. So that's the reason why in EA you need to be 18 plus, but for others you can just be 12th pass, except for CPA, which needs a bachelor's degree mandatory and a passport which should have Sripal Jain name clear in your education document. What if, sir, my name is Sripal Kotari, in education document Sripal Jain?
unnecessarily you will go for a big problem. If your names are different from your education mark sheet, please ensure that you apply for an affidavit. My entire Simandhar team would help you out. So you don't need to worry at all. We will help you in the name change affidavit and each and everything. Sir, why other institutes are not talking about this? Because the moment they'll talk, no one will enroll. That's the reason they are not talking about it. But you please ensure that you be very, very careful that your first name, last name should match with your education document and you should have a passport. Sir, why the eligibility is such a big torture? The problem is because you need to have transcripts. These are nothing but your mark sheet in a sealed envelope. It is very difficult to get transcripts. So please ensure that you apply for your mark sheets straight away the moment you are eligible for the CPA exam and all. So these are nothing but you will get from the university. It's all online. Simandhar team helps end-to-end in eligibility, licensing and exam. There are a lot of other institutes who are doing this, but they don't know anything about it because they were primarily CA coaching institute who have started CPA recently. So they don't know that what is eligibility technicality, what is the licensing, and what are the materials and all. So that's why you need to be very careful in this point number 10, especially with respect to CPA. Okay. Be very, very careful on the eligibility. Even if someone tells passport not needed for CMA, no. Passport is not required. Sai Harshita Buduma. Exam duration is 4 hours, 4 hours, and for EA 3.5 hours. For other qualification like CIA 2.5, and then you have 3 hours. Exam pattern 50% MCQs guys for CPA, 50% is case law. Again for CMA you see that 75% is MCQs, 25%. Sir, why sir? For CPA they have kept 50% and for CMA 75%. Like I said, CMA typically is done by the student audience also. So that's why they wanted to make it little easier. That's why you have 75% MCQs and 25% essays. And you need to score 75% right. Sir, how will we hit 75%? Then it is so tough. It's not tough because if you see MCQs are 50%, so multiple choice hai. So it's a very easy exam and getting 75 is not at all tough because we have maintained a pass rate of almost 90%. A lot of our students have scored above 95 also. There are 6 toppers in CPA in India who have won the Elijah Watsels Award, which is typically given to a student who scored 95.5 as an average out of 99 because there is no 100 marking in CPA. So 95.5 is an average. So our 6 students have got that. And that award is given to out of 1 lakh student, 10 people, 10 to 20 people. And in that, 6 people have won from India. All the 6 are from Simandhar education. So it's not tough to get such scores. It's very easy, but you need to be focused and consistent. CMA, you need to score 72% out of 500, 360 you need to score. EA, again, you need to score 80%, which is out of 130. It's a 100% MCQ enroll agent. ACCA is again a mix of MCQs and essays. And then in CIA, again, it's a 100% MCQ. Okay. Recently, I passed the exam on Indian. All are asking for NAT, eager to do CPA, but can't able to do due to financial constraint. Ajay, I'll come to that question. Okay, testing window. If you see that, it's a continuous testing window. You can write the CPA exam any month in the year, except Saturday, Sunday. You can write any day. But for CMA, you can write only January, February, May, June, September, October. Then for EA also you can write year round, but the problem with enroll agent is you don't get the slots so faster. So please ensure that your slots, you book for the slots as soon as possible because the exam is online guys. You need to go to a Prometric test center and write the exam. There are a lot of institutes who are not talking about slots and all. I would want to be very honest here. The major challenge of e-exam is amazing exam. The biggest difficulty is to get the slots. So if you get the slots faster, you can write the e-exam. Okay. I think Evelyn, you have tried wrongly EA better or EA. Actually, I think you might have spoken about EA is better or CMA. So I would say both are good. It depends on where you want to go. If your interest is US tax, then go for enroll agent. If your interest is management accounting, then select CMA. And again, CIA is also written across all the months. ACCA is only in the March, June, September, December window. Results is 7 to 15 days. 2 months CMA takes to get the result. EA, instantly you can see that you are failed. So you don't even need to speculate, don't even need to pray to God or something. Straight away your result will come. So no speculation, nothing. You will get the direct result the moment you click submit and you will get the result. So see there, same with case of CIA also. Only for ACCA you have 45 days and same goes in for CMA and CPA sometimes takes lesser time. Okay. Prometric test centers, you have 8 cities, 10 cities here. Everywhere the exam is on the Prometric driven. And then you have licensing. You need to get the license also. None of the institutes in India or hardly any institute know about CPA licensing.
I myself a licensed CPA, so I myself will sign your signature. I mean, sign your licensing experience, because you need 1 year of experience in order to get a CPA license. Though we have mentioned 2 years, but 1 year also is more than sufficient. 150 credits have undergone a change to 120 from next year. So if you're a BCom and CA enter also, you will be eligible for licensing. You don't need to do any bridge course to get additional credits also. So that's the massive news. That's a new update which have come in CPA. So next year onwards, it will go to 120 credits. I'll take a pause here and I'll put up some questions in case anyone has. Yes, host, can we unmute some of them, and if they can raise hands and we can just kind of understand what are the questions of everyone. Yes, Anurag, go ahead. Dinesh, Dhavani, go ahead. Yes, Dinesh, go ahead. You're on unmute. Hello. Yes, Dinesh, we are able to hear you. Please go ahead. Yes, yes. Sir, I am from Pune location. Mhm. Actually, I have 10-year experience in account in finance. Actually, my completed is MBA 2013. And last time I am meet to ma'am talking to about CMA regarding, and I talked to you specially. सर एक्चुअली क्या हो रहा है मेरा कि मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ गया है पर मेरे को वैसा पोस्टिंग नहीं आ रहा कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा एमबीए है तो मैं कौन सा कोर्स करूं इसलिए मेरे को डाउट था सबसे ज्यादा इसलिए मैं ये कर रहा और मेरे को सिमंदर के थ्रू कोर्स करना है सर मेरे लिए कौन दिनेश देखो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है एक्चुअली. सीपीए लुक्स बेटर बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग के एक्सपीरियंस में ही हो, और क्योंकि आपको अनुभव भी है, सो यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, तो सीपीए का क्वालिफिकेशन वुड फिट इन योर गेम. ठीक है, और एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट है, अकाउंटिंग का ही एक्सपीरियंस है, एंड यू कैन स्टडी दैट एंड फिनिश दैट ऑफ ऑल्सो इजीली. क्योंकि सीपीए में अकाउंटिंग कंटेंट ज्यादा है, and बाद में आई थिंक ऑडिटिंग एंड टैक्स है. सो इट शुड बी इजीली बी डूएबल. बट आपके केस में एक चीज बोलूंगा, क्योंकि आप बहुत साल बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लासेस जरूर अटेंड करना समंदर के. बिकॉज फॉर द पीपल, अभी आप सडनली फार का बुक खोलोगे तो आप डर जाओगे दिनेश, क्योंकि इतना वास्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट्स है थोड़े. तो इसलिए ब्रशअप करने के लिए हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, जर्नल एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, लेजर. थोड़े लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मतलब इतना सिंपल है तो भी सर पढ़ा रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, सिंपल चीजों में ही सबसे डिफिकल्ट चीजें छिपी रहती है. तो इसलिए हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर देन वी स्टार्ट विद फार. सो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू गो फॉर अ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर्स फॉर श्योर दिनेश, and then you can start off the CPA as such. Okay. नहीं नहीं सर सीपीए या सीएमए करूं मैं सीपीए सीएमए ओके, नहीं तो ठीक है. आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. तो आपको सीपीए चाहिए या सीएमए चाहिए? विच वन यू आर लुकिंग? मैं मैम से बात मेरा बेसिकली बीकॉम नहीं है मेरा बीसीए के बाद एमबीए फाइनेंस में है ओके, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्या इसलिए मैं कंफ्यूजन है पहले तो कौन सा कोर्स करूँ कंफ्यूजन है एक बार मेरा कंफ्यूजन हो गया ना क्लियर तो मेरे को तो आप इजी कोर्स से पहले स्टार्ट कीजिए, सीएमए से स्टार्ट कीजिए, फिर सीपीए पे जाइए. क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, मेरे को नहीं पता था. अगर आप एलिजिबल रहते तो सीपीए रेकमेंड करता था, बट आप एलिजिबल नहीं हो तो स्टार्ट ऑफ विद यूएससीएमए, इजियर सब्जेक्ट है, फटाफट खत्म करके फिर सीपीए के लिए भी जाइए. आई वुड रेकमेंड बोथ ओके द थिंग्स. बट पहले एक और इजी डाल के थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कीजिए. लाइक आई सेड अगेन, यू स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यूएससीएमए करके फिर सीपीए के लिए पुश करो, क्योंकि दो सब्जेक्ट सिमिलर है सीएमए के सीपीए में. जैसे एक फार है और एक बार है डिसिप्लिन में. सो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. ओके. ओके सेकंड और एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभी 10 साल में मेरा पूरा इंडियन कंपनी है मैं 3 कंपनी चेंज कर दिया वो इंडियन कंपनी अगर इन केस मैं सीपीए कर जाता हूँ तो उसी कंपनी में मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हो जाता हूँ क्या इंडियन कंपनी में सीएमए करके ये नहीं मेरे नहीं, यूएससीए में इंडियन कंपनी में कुछ भी नहीं मिलता एक्चुअली, कोई जॉब नहीं मिलेगा. ठीक है, ओके ओके मतलब आप खुद सोचो दिनेश, अगर कोई बोल भी रहा है मतलब वो बेवकूफ बना रहा है आपको. क्योंकि एक यूएस का क्वालिफिकेशन है तो इंडियन कंपनी में क्यों मिलेगा आपको जॉब? इन केस अगर वो इंडियन कंपनी यूएस में लिस्टेड है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, देन इट मेक सेंस. बट अगर वो बोल दे कि यार यूएससीएमए को टाटा स्टील में मिल जाएगा जॉब, विच कैन नहीं बी पॉसिबल बिकॉज टाटा स्टील की सब्सिडरी है लंदन में, बट यूएस में कुछ है क्या? नहीं है. तो देन टाटा स्टील विल नॉट हायर यू, एज सिंपल एज इट इज दिनेश. बट व्हाट अबाउट टाटा कम्युनिकेशन सर? 100%. अगर उनके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के है, थोड़े फाइनेंस एनालिसिस के प्रोफाइल्स है, तो देन यू कैन फिट इन. बट ओके फोर इंडियन कंपनीज में जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है एंड ऑल, दिनेश यू कैन फिट इन, राइट? बिकॉज वहां पे इंडियन अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, इंडियन कंटेंट फॉलो करते हैं, तो वाई यूएस सीएमएस विल बी हायर्ड? देखो यार, एनरोल कराने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है दिनेश, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट हैज टू बी स्पोकन, राइट? तो इंडियन सीएमए अलग है और यूएस सीएमए अलग है. वैसे कंपनीज में इंडियन सीएमए वुड हेल्प यू, नॉट यूएस सीएमए. ओके. यस तो द डाउट इज
10 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा इंडियन कंपनी। मैं अभी सीए में करूंगा, तो मैं जैसे भी सीए में यूएस कंपनी में जाऊंगा, तो उस टाइम वो 10 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस कंसीडर होगा फिर सीए में यूएस कंपनी में। 100%, वो वेरिफिकेशन बराबर होगा। ओके ओके, नो इशू, Okay. थैंक यू। Yes, next. Anurag, go ahead. Anurag Singh. Anurag, you're unmuted. Anurag, can you go ahead? Okay, Labdhi Bhavna, can we unmute Labdhi Bhavna there? And Hello. Jyoti Singh. Yeah, Hi. Anurag, go Am I ahead. audible? Yeah, Labdhi, go ahead. Yeah. Hello, sir. Firstly, thanks a lot for this comprehensive session. I just had two questions. Sir, I'm a chartered accountant in India, having 2 years of work experience. So, firstly, my first question was that you had mentioned कि तो 1 साल या 2 साल का work experience चाहिए, right? So, will my already existing work experience count? Like I've worked in KPMG as well as I'm हाँ, that working I in will CMA. verify easily. मैं ही तो वेरीफाई करूंगा, अनलेस वो बोगस एक्सपीरियंस ना हो, तब तक मेरा सिग्नेचर काम चलता है। नहीं बोगस नहीं रहा मैं तो मैं सोच रहा फंस था, जाऊंगा। समझ में आ सॉरी रहा है? सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोगस एक्सपीरियंस, आई वाज वंडरिंग कि सीपीए करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस शुरू होगा, नॉट। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। प्री सीपीए एंड पोस्ट सीपीए एनी एक्सपीरियंस इज वैलिड। पहले भी गॉट करो इट। या बाद में भी करो, दोनों एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड। एंड प्रीसीडिंग माय 3 years से पहले वाला एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। अंडरस्टैंड दैट? ओ प्रीसीडिंग मतलब क्या? मतलब मैं सीपीए आज किया हूँ, उससे पहले हाँ, लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस, उससे पहले वाला एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके। right, understood. Okay, sir. Got it. And my final question, sir. Sir, actually, I had an inclination towards pursuing a job in the US. And right now, as you said, I have 120 credits because I've done CA as well as BCom and I've checked my eligibility. But down the line, like I was told that if you wish to pursue a job in US, it's better to have a master's degree from abroad. So just wanted to check if my thought process is right and would नहीं also. नहीं 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 नहीं, सो लवली, फर्स्ट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आप सिर्फ सीपीए कीजिए पहले, फिनिश इट ऑफ। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू वांट टू डू सीपीए? एक्चुअली यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? आप सीपीए Yeah, क्यों करना चाह रहे हैं? I've been working in US taxes, sir, and in my current company, which is Shell, I'm working in US taxes, and मेरे को काफी inclination आ रहा है, like towards towards the US taxation system, and it's pretty interesting. So that's why I ओके, was pretty much inclined towards the coursework. राइट, देन दैट मेक्स सेंस। तो फिर Hmm. ठीक है, आई थिंक सीपीए मेक्स सेंस इन योर केस। फिर क्या करना, शेल को ही बोलना जरा यूएस भेजाओ बोल के। खुद क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो मास्टर्स में? शेल करा सकती है ना, इंटरनल आईजेपी करके L1 के वीजा पे भेजा सकती है। देखो, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास स्टेम का रूट है, Okay. तो हम तो Okay. अच्छा ही चाहते हैं कि एनरोलमेंट हो। बट इन Hmm. योर केस यू शुड ट्राई आउट फर्स्ट कि भाई शेल में ट्राई करो। अगर वो इंटरनल जॉब पोस्टिंग कराते हैं तो देन इट्स गुड। I'm not sure अगर उनका कुछ policy है, sir, वैसा. I'll just check it out. हंड्रेड But परसेंट रहेगा यार, ऐसा क्यों नहीं रहेगा? अगर नहीं है तो बनाओ पॉलिसी, बोलो उसको मैं इतना अच्छा परफॉर्मर हूँ, यूएस भेजाओ मुझे, काम खत्म। पॉलिसी नहीं है तो हमसे पूछो, हम ड्राफ्ट करके भेजाएंगे। इतने कंपनीज में है, यूएस कंपनीज में, फिर दे एंकरेज पीपल फॉर आईजेपी। उनको भी तो टॉप परफॉर्मर्स को रिटेन करना है, राइट? सो आईजेपी तो 100% रहता है उन लोग में। अच्छा, तो ट्राई you टू डू wouldn't इट हंड्रेड suggest. परसेंट शेल की फाइनेंस हेड को मैं पहचानता भी हूँ, सो इफ यू वांट वी कैन डेफिनेटली, यू कैन जस्ट सेंड मी ऑन लिंक्डइन रिक्वेस्ट, वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन दैट। ओके? Sure, sir. Thank you so much. So you wouldn't suggest pursuing a master's, rather you would suggest to go through this route, right? यस, सिर्फ सीपीए करो आराम से। Okay. Okay. सो आई डोंट थिंक सो मास्टर्स का भी टाइम है, भी रुक सकते हो आप। ठीक है? All right. Thank you so much, sir. थैंक यू। यस, दिनेश धवाने, दिनेश को आई थिंक वी हैव कवर्ड, राइट? ज्योति सिंगल, प्लीज गो अहेड। Yes, sir. Hello, sir. Sir, I want to pursue CPA. So, first of all, I would like to tell you about myself. Sir, मैंने 2013 में CA intermediate complete किया था. Sir, I am audible? यस 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 ज्योति। Yeah. Then, sir, 2014 में I got pregnant and my baby delivered, and then thereafter I dropped my CA finals, and due to which I didn't complete my studies, and now I want to do my CA finals. So there is a second thought whether should I do CPA or should I do CA finals. और I am now 34 years of age. So क्या मैं अब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? सेकेंडली कि अगर मैं अब इसको स्टार्ट करूँगी तो कितना उसमें मुझे एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कितना मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैंने पहले 2013 में CA इंटरमीडिएट क्लियर किया था और उसके बाद मैंने स्टडीज़ की हैं, बट सीए के लेवल की नहीं की हैं। तो सर आप मुझे I don't क्लैरिफ़ाई think कर so. देंगे तो मैं I बात don't think so. करूँगी। That's a problem at all, right? और एज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ बताया था
एंड दैट्स व्हाई आई ओपन दिस. आप देखो अपर्णा सिमंदर का एक जबरदस्त वीडियो है एक्चुअली. तो आप वो देखोगे 52 ईयर्स ओल्ड में उसने सीपीए पास किया है. यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट, राइट. बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है. और देखो मदर्स डे स्पेशल में मैंने 6 मदर्स के साथ एक पॉडकास्ट किया था. आई थिंक दैट वाज 2 years बैक. और तब के टाइम पे आप देखोगे इतने जो लोग प्रेग्नेंट थे, जिन्होंने 9th मंथ की प्रेगनेंसी में एग्जाम लिखा था, तो बहुत सारे हमारे पास इंटरेस्ट है. एंड नॉट जस्ट एग्जाम, दे स्कोर 98 97 ऑल्सो. मतलब एग्जाम नहीं, उन्होंने एग्जाम को नेल किया था. सो आई डोंट थिंक सो Okay. किड्स आर अ प्रॉब्लम. रैदर बच्चे रहते हैं ना, तो आपको और कोर्सेस करने चाहिए. क्योंकि अगर हम्म. अगर माँ ही पढ़ती है तो बच्चा एक्चुअली माँ को देख के और पढ़ता है. सो किड्स एक्चुअली मिमिक व्हाट देयर पेरेंट्स डू. तो आप रैदर अननेसेसरली डिबेट्स में हस्बैंड से टाइम वेस्ट करने के बजाय आई थिंक आई वुड रैदर से कि आप पढ़ाई पे स्टार्ट कर दो. बच्चा वही देखता है जो माँ करती है. अगर आप पढ़ोगे तो वो भी पढ़ेगा ऑब्वियसली. सो इट इज ऑल सर मेरे मेकिंग 2 परफॉर्मेंस, बच्चे राइट. हैं, एक छोटा है 3 इयर्स का और एक डॉटर है 10 इयर्स की. अच्छे तो दोनों सीखेंगे ना. आप पढ़ रहे हो तो वो लोग भी देखेंगे कि वो पढ़ेंगे, राइट. सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैं मतलब कितना टाइम इसको मुझे डेली देना होगा कि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ? कुछ भी और नहीं मुझे है एक्चुअली. 2 घंटे दिन के आप दोगे तो आराम से पास हो जाओगे, राइट. एंड दीज ऑल द वुमेन दे जैसे हैव कि गिवन द सीए. एग्जाम, दे हैव पास्ड आल्सो, राइट. सो आई डोंट थिंक सो ज्यादा टाइम ओके. निकालने की जरूरत है. दो जैसे घंटा सीए बहुत ज्यादा फाइनल्स हो में जाएगा. हमें 10 टू 14 आवर्स पढ़ना होता है. नहीं नहीं नहीं, अ, यहाँ पे कुछ नहीं है. क्योंकि सीए में क्या है, 20 पेपर है, तो इसलिए 20 घंटे मैं पढ़ता था. तो आपको वो टॉर्चर हुँ. सहन करने की जरूरत नहीं है. तो मेरे टाइम पे आई यूज्ड टू स्टडी 16 आवर्स डेली. तो आई सर डोंट अब थिंक सो मुझे आपको सीए ये ड्रिल फाइनल्स कर. करना चाहिए या फिर सीपीए में ही एनरोल होना देखो चाहिए? क्योंकि सीए तो वन ऑफ फाइनल. द बेस्ट क्वालिफिकेशन है, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुँ. इज वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट इस समय पे आप कर सकते हैं क्या? आंसर इज ऑब्वियसली नो. क्योंकि आप सीपीआई ही 2 घंटे निकाल सकते हो. सीए में तो आप सवाल ही नहीं है. आप पढ़ोगे, बच्ची बाजू में रोते रहेगी नॉन स्टॉप, तो आपके दिमाग में तो कुछ हुँ. जाएगा भी नहीं एक्चुअली, राइट. तो हुँ. आपको जो भी टाइम है आपके पास 2 से 3 घंटे, वो आपको पढ़ना है. हुँ. एंड आई थिंक जी. सीपीए इज 4 पेपर एग्जाम. सीए आप 20 पेपर कौन रखेगा अभी? अगर आप सीए इंटर जी. भी हो तो भी 8 16 पेपर है. और सो आई डोंट थिंक सो हुँ. इतने पेपर्स के लिए पढ़ने का टाइम है. आप रैदर सीपीए करके जॉब ले लो, फिर सीए करते रहो लाइफ टाइम तक. नो वन विल स्टॉप यू डूइंग सीए आल्सो. दोनों कर लो, टेंशन क्या है. बच्चे और इंस्पायर्ड हो जाएंगे, मॉम इतने इतने क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, मेरे को भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, राइट. तो आई थिंक दैट इज व्हाट यस इट सर. इज. ओके. सर जैसे कि अभी मैंने कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था तो कहीं से कोई शॉर्टलिस्ट नहीं होती एप्लीकेशन. गैप भी वो है और सीपीए बनने एक्सपीरियंस के भी बाद मैं नहीं है. सब करवा दूंगा. यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. वी आर टाइड अप विद सो मेनी कंपनीज. आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी ऑन द प्लेसमेंट्स एंड ऑल. ओके. आप देखोगे समंदर ओके. की वेबसाइट पे इतने लोगों को प्लेस करा है. बात करें, लोग प्लेस होते रहते हैं. आई थिंक प्लेसमेंट, गेटिंग अ जॉब इज नॉट सो डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. व्हाट इज डिफिकल्ट इज टू स्टडी. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पढ़ने के बाद क्या मिलेगा वो सोचते. तो आर वी एज्यूमिंग दैट वी आर पासिंग इमीडिएटली? तो ऐसा तो होता नहीं है, राइट. फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन पासिंग द एग्जाम. प्लेसमेंट एंड ऑल यू लीव इट अप टू अस. वी आर टाइड अप विद ऑलमोस्ट 250 प्लस कंपनीज, राइट. सो वो तो एकदम इजी काम है हमारे लिए. बट सर आर वी गिविंग गारंटी? 110% नो. बिकॉज आपके स्किल्स भी उस पर डिपेंडेंट रहता है. तो आप कैसे परफॉर्म करते हो. आप थोड़े लोगों को, हमको हैदराबाद में ही चाहिए, हमको बैंगलोर में ही चाहिए, घर पे ही बैठना है, घर से बैठ के काम करेंगे, सो के काम करेंगे. So all those terms and condition will not be applicable, right? So I cannot give jobs based on convenience. जॉब है पूरे इंडिया में. 90% जॉब्स इसलिए नहीं मिलते, लोगों को रिलोकेट नहीं कर पाए. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अनदर 10% वालों को भी इसलिए जॉब नहीं मिलती, घर पे बैठना. तो ये दोनों लोगों का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. तो इसलिए इधर हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देंगे. जहां पे भी जॉब आएगा, यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट एंड गेट फॉर दैट. ओके. ओके सर. ओके, थैंक यू सो मच सर. है ना. सो स्टार्ट इंस्पायरिंग योर किड्स. एक्चुअली जब अभिमन्यु के पुत्र सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो आई थिंक योर किड्स आल्सो कैन गेट इंस्पायर्ड, राइट. सो कीप स्टडिंग एंड या ऑफ दैट्स व्हाट कोर्स. द किड्स विल बी तो गेटिंग थोड़ा इंस्पायर्ड. कॉन्फिडेंस लेवल अभी बूस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मतलब मुझे करना है ये तो मुझे पता है. आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे करना है, डिटरमिन्ड अरे हूँ. यार, एक बस 52 ईयर अंदर ओल्ड से वुमेन एक कर पा फियर रही है. है. एक ज्योति, एक फियर है. 52 ईयर ओल्ड वुमेन कर पा रही है अपर्णा, तो आप 34 ईयर ओल्ड होकर नहीं कर सकते? सर मैं हाउस वाइफ हूँ ना, इतने टाइम से मैं वर्किंग में अच्छा नहीं अच्छा, थी चलो तो. आपके हाउसवाइफ का भी क्लैरिफिकेशन कर देते हैं. 1 मिनट, हमारी एक हाउसवाइफ भी पास हुई थी, भावना जैन बोल के. Yes, so if you can see that, so you have Bhavna Jain here, right? So आप देख सकते हैं ना ज्योति. यस सर. सो ये भी तो हाउसवाइफ है ना, 17 साल हाउसवाइफ थी. और यू कैन रीड दिस, शी वाज अ बीकॉम आल्सो, शी इज नॉट इवन सीए इंटर और समथिंग. आपके पास तो बेस भी अच्छा है. ओके. यस सर. सो यू कैन इजीली डू इट. ओके.
Okay, sir. Yeah, yeah, Jyoti. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Jyoti. Yes, next, please raise your hands. Already so many hands are raised. Rahul or Rohan, go ahead. Rohan Bilwal, go ahead. Hi, sir. Yes, Rohan, go ahead, please. Am I audible? Yes, yes, Rohan. So, sir, my question is like, what is the like passing criteria for EA, enrolled agent, and what strategy I can follow to crack that particular exam? So you're already enrolled with EA or how's it Yes, like, Rohan? yes, I am enrolled with EA. Already enrolled with EA with Simandhar. Okay, and how are your classes, Rohan, going on? सब बराबर चल रहा Currently, है I'm नहीं चल रहा? watching. Currently, I'm watching my classes in my during my transport when I am traveling. So that is the reason I just want to know the strategy and also the passing criteria for the same. Okay, तो रोहन बराबर तो चल रहे हैं ना classes? Are you able हाँ to जी, understand what is happening or not? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर ओके रोहन, सो जी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, आपको ये पार्ट 3 से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट विद अच्छा, पार्ट 2 एंड देन फाइनली विद पार्ट 1 एंड दैट वुड बी द इजियर पार्ट इज ये पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, थियोरेटिकल है बहुत, तो इजीली पास कर सकते हैं। देन गो विद पार्ट 2 एंड देन फाइनली विद पार्ट 1। Okay, part 1 is little the tougher part. That would be the strategy actually. Passing mark is 105, 100% MCQs है, 130 में से 105 लेके आने का है, ठीक है। ओके, एंड जस्ट इंश्योर कि आप एक भी एमसीक्यू और एक भी सिमुलेशन छोड़े नहीं, राइट? और टेलीग्राम में एक्सट्रीमली एक्टिव रहो, ओके? ओके, एंड इफ यू वांट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल श्रीपाल आल्सो। आई डोंट नो इफ यू हैव सब्सक्राइब फॉर इट, बट इट्स लाइक 2000 पर मंथ। बट उसमें क्या होता है, डिजिटल श्रीपाल इज लाइक आर एआई। तो ये एआई ने क्या किया है, इसने पास किया है सीपीए सीएमए ये एसएससी एग्जाम विद 95% एक्यूरेसी। मतलब द मोमेंट यू विल पुट क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप इट कैन इमीडिएटली आंसर दैट क्वेश्चन। सो इट्स सुपर फास्ट, मतलब टर्न अराउंड टाइम इज लाइक 10 seconds or so. That would be the turnaround time. Okay, so ओके, if you want to apply for that also, but normally हम लोग उन लोगों को recommend करते हैं जो एग्जाम से 1-2 महीने पहले है, राइट? और ये वेबिनार में तो हम लोग ने एक अनाउंसमेंट भी किया था, जो भी बंदा मतलब एनरोल करेगा सिमंदर के साथ, आई विल पर्सनली मेंटर देम। आई डोंट नो इफ डिजिटल मार्केटिंग टीम हैव sent out an email or not. So today's webinar who all are enrolling with Simandhar, so I हाँ, have taken the personal mentoring responsibilities. Rohan, you're already enrolled, so please जी, do share your number also to my support team and I'll श्योर, personally mentor as well, Rohan. ठीक है? श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच, श्रीपाल Thank सर। you, Rohan. Take care, yeah. थैंक यू, यू टू सर। Anurag, go ahead. Anurag Singh. Hello. Yes, Hi. Anurag, go ahead. Yeah. So I have a question. Like I have 12 years of experience in accounting domain, accounts payable, receivable. Okay. Yes, Anurag, you're audible. Hello. Yeah, Anurag, you're audible. Yeah. So I was, kind of shortlisting two courses among enrolled agent or CMA. Which one would you recommend? So Anurag, depends on where your experience is. If you're working in the US tax, then it makes sense to go with enroll agent, Anurag, because you already have a lot of experience, right? तो अगर accounting में experience है तो it's better you go for US CMA than enroll agent, because the problem is आप 12 साल काम करने के बाद you're doing EA and then you need to start from the scratch again. So वो आपके लिए problem होगा क्योंकि you'll be considered as fresher because you have no prior experience in US tax. So if you're already experienced, Anurag, my recommendation would be USCMA. It will correlate with what you're currently doing and it will add value to also your profile and you don't need to start from the scratch. Okay. Okay. How about the employment opportunity for CMA? Is it as good as CPA? Yes, it is good. Experience लोगों के लिए भी अच्छा है, freshers के लिए से पैकेज थोड़ा कम है, but normally freshers के लिए भी अच्छा ही है, but पैकेज कम रहता है तो इसलिए लोग थोड़ा हाँ वो करते रहते हैं. But overall the recognition is very good. It's an international management exam, तो बहुत सही है वो. But Sripal sir, in my case, like I had taken a break, like I was pursuing something in the business side, freelance. So it's been 2 years of gap. So will that be a problem? नहीं, इसलिए तो हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अनुराग. सो यू स्टार्ट अटेंडिंग द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लासेस एंड ऑल एंड देन गो फॉर द यूएससीएमए क्लासेस. सो दैट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी बिकॉज यू हैवंट टच द बुक्स इन एजेस, राइट? तो थोड़ा वहां पे डिफिकल्टी और चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए, तो वो आप पहले वहां से स्टार्ट करो. क्योंकि द मोमेंट यू टेल मी कि भाई मैंने 13 साल का एक्सपीरियंस, तभी मैं समझ गया कि आप बुक तो खोले ही नहीं होंगे.
तो बहुत टाइम हो गया बुक खोल के. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट ऑफ विद बेसिक्स एंड देन स्टार्ट विद यूएस सीएमए एंड देन लेटर सीपीए भी कर सकते हैं अनुराग. My recommendation would be CMA and CPA both for you. Both are terrific qualification, terrific combination in your case. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Rahul Tekchandani. Hello. Yes, Rahul. Yeah, sir. Thank you so much, sir, for this session. First of all, I have two questions. One related to the validity of three things. Our evaluation. So, I wanted to pursue CPA, but मेरा जब CA हुआ था, I am a CA with 7 years of experience, out of which 2 years in US taxation. And अब सीए के बाद मैंने कसम खा लिया था कि मैं किताबें नहीं उठाऊंगा, बट अब मेरे को सीपीए के लिए थोड़ा इंक्लिनेशन आ रहा है, आई शुड परस्यू सीपीए. और मेरा लास्ट 2 years का एक्सपीरियंस टैक्स का है, और जिसमें बहुत टाइम मेरा लग जाता है और मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं 6 महीने ही फ्री निकलते हैं मेरे, थोड़ा लीन पीरियड होता है, अदरवाइज तो बिजी रहता है. तो मेरे को क्वेश्चन है कि वैलिडिटी से लेकर, क्योंकि सीपी का इवेल्यूशन की वैलिडिटी क्या होती है, सिमंदर का जो आई विल एनरोल माई सेल्फ राहुल आप उसकी कहाँ काम वैलिडिटी कर रहे हो अभी? सो वेयर आर यू वर्किंग? आई एम वर्किंग इन जयपुर फॉर मीडियम. नहीं, यू आर वर्किंग इन जयपुर. कंपनी का नाम, अच्छा कंपनी का नाम है जयपुर मेरिडियन है सर? नो, कंपनी का नाम है फॉर मीडियम. ओके. ओके. तो टाइम कितना मिलता है आपको हर दिन? सर जनवरी टू अप्रैल एंड अगस्त सितंबर फुल बिजी रहता है. उसके अलावा यस 6 months आई कैन टेक आउट 2 to 4 hours डेली. तो मजे लाइफ में राहुल आराम से पढ़ सकते हो यार सीपीए तो आप. आई थिंक इजीली इट कैन बी डन इन योर केस. आई डोंट थिंक सो. तो वैलिडिटी तो मेरा आपको. यस हाँ. मेरा कैंसिल भी 24 months का था शायद. आई विल एनरोल माई नहीं नहीं सेल्फ. नहीं नहीं 24 months का बहुत टाइम है. 24 महीने इज टू मच ऑफ टाइम. आप दो डोंट गो विथ इंस्टीट्यूट विच टेल पास अंटिल गारंटी, क्योंकि उनको मालूम है आप पास तो होंगे नहीं, तो इसलिए वो लोग अनलिमिटेड पासिंग का दे देते हैं वहां पे. हमारे यहाँ क्या है, हम लोग 2 साल का वैलिडिटी इसलिए डालते हैं ताकि वो लोग प्रेशर में रहे. सेम इन आवर कंपनी ऑल्सो एवरीवन हैज टू बी इन प्रेशर. जब प्रेशर नहीं रहता तो परफॉर्म नहीं करते. तुमको लगता है अरे चिल मार करेक्ट. सकते हैं अपन लाइफ में चिल मारने वाले लोग बहुत बड़ी परेशानी है उनके लिए. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 2 साल का टाइमलाइन लगो. अगर डेडलाइन ही नहीं है तो हाउ विल यू नो व्हाट आर यू चेजिंग एट, राइट? सो लाइफ विदाउट गोल डजंट मेक एनी सेंस. सो आई थिंक 2 years इज टू मच ऑफ टाइम. और अगर 2 साल में आप नहीं कर सकते तो मतलब आप कर ही नहीं सकते एक्चुअली. बाद में हम लोग एक्सटेंड करते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. 6 महीने 4 महीने वी गिव फ्री एक्सेस. बट वो भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि ज्यादा दूं नहीं. क्योंकि क्या होता है, जो जिसने 2 साल तक पढ़ाई नहीं की, व्हाट इज द गारंटी दैट ही विल स्टडी अनदर 6 months? इसलिए ये जब ये लोग बोलते हैं ना सर वो इंस्टीट्यूट मेरे को अनलिमिटेड दे रहा है, आप 24 months दे रहे हो, फिर अनलिमिटेड के लिए और पैसे चार्ज कर. अरे भाई चक्कर क्या है, 2 साल में आप पास नहीं हो पा रहे तो पास ही नहीं होगे. तो वो तो अनलिमिटेड बोलेगा ही. वो तो चाहता है कि आप एनरोल करो, यही लॉजिक से. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर प्लेड, राहुल. सो आई थिंक यू शुड बी लिटिल केयरफुल एंड 2 years ओनली यू शुड अप्लाई फॉर इट. हमारा 5 years का प्रोडक्ट भी है बट वो एक्सपेंसिव है. डोंट वेस्ट मोर मनी. आई थिंक 2 years इज मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम. ऊपर से सिर्फ 4 पेपर है सीपीए के. व्हाई डू यू नीड 5 years टू पास दैट एग्जाम? इतना तो 4 पेपर तो आराम से इंसान कर सकता है. क्वार्टरली एक पेपर भी लगाओ तो भी 1 साल में खत्म हो जाता है सीपीए का एग्जाम. आई डोंट थिंक सो वैलिडिटी शुड बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. और इवेल्युएशन एक बार आप एग्जाम लिखने के बाद इट इज अनलिमिटेड. इट इज वैलिड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स. बट अगर आपने एग्जाम नहीं लिखा तो इवेल्युएशन इज वैलिड ओनली फॉर 1 year. And every year you need to pay $20 to renew your evaluation report. And after 3 years you should do a fresh evaluation. तो राहुल ये थोड़ा आप याद रख लेना कि इवेल्युएशन कराते एग्जाम जल्दी लिखो. नहीं तो आप इवेल्युएशन करने श्योर का सर. एग्जाम क्यों नहीं लिख रहे भाई? तो चक्कर क्या है? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोग एग्जाम नहीं लिखते. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इसलिए 2 साल का लगा दिया ना तो प्रेशर में रहते बेटे. तो फिर एग्जाम भी लिखते, सब लिखते, पढ़ते भी, अरे भाई एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ये चक्कर में कभी कभी प्रेशर एंड स्ट्रेस आर वेरी गुड, प्रोवाइडेड व्हाट इज द यस सर. इंटेंशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रेशर, राइट? थोड़े लोग रहते हैं हमको नहीं चाहिए, थोड़े लोग रहते हैं उनको चाहिए. तो आई थिंक शुड वर्क पॉजिटिवली फॉर अस, राहुल. ठीक है. Yes, sir. Thank you so much, sir. I have two more questions. One is you just have mentioned the personal mentoring session. What is exactly that and उसमें क्या होता है? अरे चक्कर क्या है, आज मार्केटिंग टीम ने बोल रहे थे कि यार हर बार हम लोग वेबिनार करते हैं तो सब लोग थोड़े पूछ रहे थे कि यार सर ने कभी कुछ किया नहीं है वेबिनार में. तो इसलिए इन लोग ने एक इनिशिएटिव लगाया था कि जो भी वेबिनार में अटेंड करेगा और एनरोल होगा उसको हम लोग पर्सनली मेंटर करेंगे. पर्सनली मेंटर मतलब आई माई सेल्फ विल कॉल देम, डिजाइन देयर स्टडी प्लान्स, ईच एंड एवरीथिंग.
तो उनसे एंड टू एंड उनकी पूरी प्रेप लेवल भी मैं ही देखूंगा एक्चुअली, एंड आई विल ट्रैक देयर प्रोग्रेस आल्सो. सो दैट वाज द आइडिया दे वांटेड, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट अनाउंस देयर. तो जो भी एनरोल होगा, इसलिए मैं सबके नंबर बटोर रहा हूँ वहाँ पे. जो भी नंबर्स मिलेंगे मेरे को, मैं पर्सनली उनको कॉल करके एंड आई विल असाइन सम मेंटर्स आल्सो फॉर देम. ठीक है राहुल? Okay, sir. And the last question is related to EMI options. Do we have a no-cost EMI option for the fees? Because it is generally too या much. वो इंटरेस्ट हम लोग ही हिट लेते हैं. तो हम लोग तो सब लोन पे देते हैं. जब विदाउट इंटरेस्ट इट विल बी, इंटरेस्ट समंदर बेयर करता है कभी भी. सो वी नेवर पास ऑन द इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट्स. तो दैट्स फॉर श्योर. तो अगर कोई पूछ भी रहा है यार इंटरेस्ट बोल के, तो आप तो बोल देना कि भाई वेबिनार में अनाउंस हुआ था कि इट्स 0% इंटरेस्ट लोन, राइट? सो यू डोंट नीड टू वरी राहुल ऑन दैट. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Thank you so थैंक यू much. राहुल. या काशिफ मलिक, प्लीज गो अहेड. काशिफ मलिक. Hi, sir. Am I यस audible? काशिफ मलिक, अस्सलाम वालेकुम. बोलिए भाई. Walaikum salam. Sir, thank you for the opportunity. Currently I'm in Canada. So I have almost 3 years of accounting experience. I have done masters MCOM basically. So I wanted to pursue like US CPA, but I'm at the same time I have an intention that I should be able to convert this US CPA to Canadian CPA for over a period of time. So I just wanted to know like the clear way how this can be done. So you can do that easily. That's not a problem. You need to pass the CPA exam, get the license, and it is valid for 30 months. After 30 months के बाद, आप काशिफ, you Hmm. can convert US CPA to Canadian CPA. So if you have a US CPA and if you have a 30 months of experience, you can get a Canadian CPA without writing a single exam. I repeat that rule 30 again. months of अगर US yes, experience? 30 months of experience रहना चाहिए. But if you are already in Canada, in your case, unfortunately, you need to Yes. have 1 year experience in the US. तो आपको यूएस के Okay. कंपनी में 1 साल का यूएस में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. तो सर मैं सीपीए का एग्जाम अगर मैं इंडिया में लिखूं और 30 Hmm. महीने का एक्सपीरियंस इंडिया का कंसिडर करे तो वो अलाउड है, यस. बट अगर मैं कनाडा में Hmm. कदम भी रखता हूँ और कनाडा में Hmm. एग्जाम लिखता हूँ, then also I Hmm. need to have 1 year of experience in the US to get the Canadian CP. So this is the rule Okay. for US CP and Canadian CP. So the moment you are Okay. in Canada and writing the exams for CPA, the MOU becomes little difficult because 1 साल का एक्सपीरियंस यूएस में चाहिए. और जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प काम कर रहे हैं आजकल, तो थोड़ा डिफिकल्ट Hmm. बन रहा है वो. बट आई थिंक 6 महीने 7 महीने की बात है. जैसे ट्रेड Yeah. नेगोशिएशंस खत्म होंगे, फिर से हमारे ट्रम्प Hmm. साहब खोल देंगे जॉब्स, आप कर लेना 1 साल वहां पे. बट कासिफ भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूएस सीपीए इज इक्वली रिकॉग्नाइज इन कनाडा. वो कनाडा के एम्प्लॉयर को मालूम ही नहीं है कौन सा सीपीए, कैनेडियन है यूएस है, उनको कुछ लेना हाँ. देना नहीं रहता. या उनको सीपीए से मतलब है. वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करते यहाँ पे. वो लोग करेक्ट. मतलब उनको पता ही नहीं है आई थिंक. कुछ पता ही नहीं है भाई उनको. तो आप बोल दो मैं सीपीए हाँ. हूँ, वो अनलेस वो सामने से हाँ. पूछे भाई तू कौन सा सीपीए, यूएसए कनाडा है, हम्म, फिर आप बोलेंगे. हाँ. आधे 90% लोगों को हाँ. तो पता नहीं है. इंडिया में तो हंड्रेड हाँ. परसेंट लोगों को डिसिप्लिन ही नहीं मालूम कि ये टीसीपी में किया हाँ. है, आईएससी में किया है, बाहर में किया है. तो आधे तो अपने राइट कंपनी राइट. इतने स्मार्ट है, तो उसमें ही अपने आधे काम हो जाते हैं. तो आई डोंट थिंक सो यू शुड राइट वरी राइट. एट ऑल. आप यूएस सीपीए करके ही जॉब ले सकते हैं. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमनाइज, जस्ट विथ यूएस सीपीए दे राइट. गॉट अ जॉब इन कनाडा. सो इफ यू वांट, वंस you enroll, I'll give you some of my Canadian alumni. You can talk to them and kind of get in touch with them and get for some job once you pass CPA. Okay. Yeah, that would be helpful actually. That's possible. Thank you. Thank you so much. Yeah. Janaki P. She is on mute. Janaki, can we please go ahead? Yes, Janaki, go ahead. Hi, sir. Sir, Yeah, hi, Janaki. actually, I'm a company secretary having 5 years of experience, and also I'm a BCom graduate. So I just want to understand whether my company secretary experience also counts for CPA license. Yes, 100%. That's a compliance, right? Compliance is always considered, right? Secretarial. See, what are you doing? You're doing listed companies work. Company secretary का मतलब क्या है? You're doing all the listed companies compliance, secretarial laws, and all those stuff. So that is a relevant experience. Law is one of the bigger subject in CPA. Regulation is the law subject. Regulation में US tax है और business law है. ये दोनों covered है, right? So Janki, you should have no issues. And you're a practicing company secretary, right, Janki? Yes, sir. Why do you want to do CPA then? Sir, I'm actually recently I've started getting US clients also. So we wanted to get exposure of US taxation. So thought of
getting into CPA and complete that. So that Yes, it's a fantastic idea. If you do it, let me also know. Like anyways, who all are enrolling today are getting personal mentoring. Janki, please ensure that you also be in touch with me because I have huge networking. So I can introduce you to a lot of the clients also in the US. Okay. okay. So Okay, sir. I think it's a good decision because I wanted to understand. मतलब कोई यहाँ देख के तो नहीं आ जा रहा है Big Four में जॉब है तो इसलिए कर ले रहे CPA. It's very important for me to understand why are they doing, right? So their intent is very clear. So this Yes, makes sir. sense, Janki. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yeah. Yeah. Siddharth Budhiraja, please go ahead. Can you hear me? Yes, Siddharth, now we can hear. Yeah. Hi, sir. I have more than 10 years of experience in fund research, investment research. I wanted to understand how CPA can help me, and will I be able to transition to some other role? So why do you want to go in other roles, Siddharth? Fund accounting is a good experience, right? Matlab, It's you're in into fund the research, investment not fund accounting, or accounting. what is this accounting? It's fund research, ETF mutual fund, alternative research. Okay. Yeah, so once you pass CPA, we can shift the profile, Siddharth. That's not a problem. The experience is also good. I don't think so that's a problem at all. Okay. So will the CPA help me in my career and I will be able to transition? Yeah, so how many years of experience you have in fund accounting? In fund research, I have more than 10 years. No. Fund research, if you have 10 years, so you will need to start like something at the mid level. So you'll not get the same level, obviously, after CPA, and you want to get into a profile which you like the most, right? So either be in Yeah. audit or tax. See, what happens is fund research is very good for big fours in FSI vertical because big fours have a lot of verticals like manufacturing clients, financial services clients, retail clients. So if you have FS experience, they'll plot you after doing CPA, they will plot you and they'll get you into FS sector. Because Big Four का Okay. चक्कर क्या है? They get sector wise experience. So you have a financial services experience. So after CPA with an FSI experience, you can easily go into Deloitte, EY, KPMG, FSI vertical. Okay. So I think it's a very good step. I don't think so that's a problem at all, Siddharth. Okay. Thank you. Thank you, Siddharth. Muskan, please go ahead. Muskan Kansal. Muskan, we are not able to hear you. Muskan Kansal. Okay, next, Mehul Raval. Can we unmute Mehul there? Guys, can we do faster? Mehul, Abhishek, Parmeet. Yeah, Muskan, go ahead. Sir, am I audible now? Yes. हाय सर, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीकॉम में हुआ है 2021 में और उसके बाद आई हैव क्रैक्ड सम ऑफ माय एग्जाम्स तो जैसे पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का था बट ड्यू टू टाइपिंग टेस्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें देन आई जॉइंड HDFC बैंक तो उसमें मैं ऑपरेशंस का काम कर रही हूँ अभी तो अभी आई एम कंफ्यूज कि क्योंकि ऑपरेशंस में तो वर्किंग फ्रॉम 9 to 8 हो जाता है जैसे लोकल ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ बिटवीन कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए अभी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है मुस्कान? सर 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑपरेशंस में ही ये HDFC बैंक में सर? राइट सर राइट क्या कर रहे हैं? लोन पास कर रहे हैं वहां पे? व्हाट इज ऑपरेशंस और क्या डूइंग? ऑपरेशंस में सर क्लियरिंग द चेक्स हो गया कैश काउंटर्स पे हो गया मैनेजमेंट हो गया सब कुछ वो मैनेज कर रही हूँ मैं ठीक है, आई थिंक आफ्टर और क्या पैकेज है मुस्कान अभी? सर इट्स 3.5 जस्ट हाँ बस खत्म, अब तो देयर इज नो डाउट व्हाई यू शुड नॉट डू CPA, राइट? डबल द पैकेज, काम खत्म। 9 से 10 लाख का तो आराम से पैकेज मिल जाएगा आपको, ऊपर से 2 साल का ही एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक सो दैट्स सो मच ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस, कैन इजीली प्लेस यू मुस्कान। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो क्या? नहीं सर मैं पंजाब के बड़े छोटे से शहर सुनाम से हूँ डिस्ट्रिक्ट संगरूर वन ऑफ माय क्लासमेट खुशबू मित्तल हैज क्रैक्ड CPA इन हाँ, वो सिमंदर हमारी एलिजा व्हाट्सेल्स अवार्ड विनर है, जिसको yes 99 she 98 आए थे डेलॉइट में। was आई नो। sir she was my classmate in Rosemary ओके, school फिर तो yes आपको टेंशन ही नहीं रहना चाहिए सिमंदर ढूंढने के लिए, सिमंदर में एनरोल होने के लिए। sir I खुशबू was खुद just डेलॉइट में confused कि काम कर रही है। मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए तो CPA भाई, जो खुशबू ने किया है, जो अपने फ्रेंड ने किया, अपन को उसमें ही उनके ही छत्र छाया में और उनके ही व्हाट यू से मूव ऑन देयर ओन स्टेप्स, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वुड से, गो फॉर CPA मुस्कान।
नो डाउट सर अबाउट इट। वो साथ में वर्किंग करते वक्त मतलब हो जाएगा मैनेज, मतलब 1 अरे to 2 आवर्स? मुस्कान, खुशबू ने किया ना डेलॉइट के साथ। डेलॉइट में तो रात के 3-3 बजे तक काम करते हैं। मैं ईवाई में था जब रात को 4 बजे आता था घर को। तो आपके यहाँ तो 3 तो 4 बज रहे नहीं ना एचडीएफसी में। राइट सर। फिर जब मैंने साथ में सीपीए किया 3-3 4-4 बजे तक जब काम में ईवाई में, आई डोंट थिंक सो यू शुड बी एबल टू फाइंड सो मच डिफिकल्टी। आराम से पढ़ सकते डन सर, डन। थैंक यू सर। हैं। चलो, यस Hi, हुज दिस एक्चुअली, या hi, मेहुल sir. गो अहेड। Yeah, या hi. मेहुल। Yeah, so basically, sir, I'm 45. So currently into mid-management role with 16 years of experience into sales. And I ओके। did my master's in arts, PG diploma from Symbiosis. Now, basically, I want to transition into accounting and finance. So absolutely confused between CPA and CMA. That is one. And so which qualification I should prioritize for maximum ROI and future AI-proof global opportunities. So, and second question is, realistic job opportunities exist at my age beyond big four firms or not? तो मेहुल आपने मतलब वेयर आर यू वर्किंग करेंटली? I am working with Leap GB. So I'm the regional head heading entire Western region. And what is the work you are doing? All finance related, is it? No, it's not finance related. It is sales. Basically, it is overseas education domain. ओके, So all हमारे in को ऐसे all, सेल्स के बंदे चाहिए थे। सो खैर, तो मेहुल, आई थिंक दैट्स द वेरी क्रेजी प्रोफाइल। आई yeah, एम इन लव विद सेल्स प्रोफाइल। तो सेल्स इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली अमेजिंग। correct. I think you should continue in the same profile only, I would say, unless and until it is becoming very tough to handle. No, it And is nothing like, I mean, see, basically, मेरा यही था कि अगर better prospects in future अगर कोई consultancy role पे, because 10 years down the line, 15 years down the line, you know how sales works. So, I'll be out from the league if I don't reach to a specific, if I climb specific ladder. तो वहाँ पे अगर if I transition, एक ही चक्कर क्या है मेहुल जी, अगर आप सीपीए सीएमए करते हो और फाइनेंस में मूव होते हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर रोल। सो यू correct. नॉट गेट दैट काइंड ऑफ, आई वुड से, एक्सपीरियंस बेनिफिट नहीं रहेगा मेहुल। तो आई डोंट वांट टू कैन सी, मेरा काम है एनरोल कराना, राइट? सो कैन Yeah, आई डू yeah, दैट? yeah. दैट इज व्हाट आई एम नोन फॉर, राइट? सो आई नीड टू बी Correct, वेरी न्यूट्रल एंड एकदम ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस। सो आई डोंट थिंक सो ये डिग्रीज आपको हेल्प करेंगे okay. अगर इन केस इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम जॉब, आई मीन पे इंक्रीज। बट हाँ, Mm-hmm, designation or salaries all will correct in long run. So you can mm-hmm. start off with finance, sacrifice some amount. It's all about, do you want to sacrifice or not now? And second question is, sir, can I get a job just being 45? I mean, I have placed at 50 to 53-year-old. Rather, people love hiring senior people, थोड़े responsible रहते हैं, disciplined रहते हैं। आई Correct. थिंक तो जितना सीनियर बंदा हो उतना डिसिप्लिन रहता है, उतना कंसिस्टेंट रहता है और उतना लॉयल रहता है। Hmm, तभी आप देखो, hmm. आप कोर्ट में जाते हो तो लॉयर्स को थोड़ी एज से पहले पहले, यू कैन नॉट बी अ जज जस्ट बीइंग अ Correct, जूनियर, राइट? correct, दिस रीजन correct, व्हाई वी पुट दैट। और थोड़े सीनियर correct, मेंबर्स में ग्रीड कम रहता है। जहाँ correct, ग्रीड कम रहता है वहाँ पैशन बहुत इजीली आता है, correct, राइट? एंड वर्क पे सिंसियरिटी ज्यादा रहती है। तो दैट इज correct. व्हाट इज द स्ट्रेटजी। So I आई am, थिंक मतलब यू I'm शुड गेट इजीली जॉब। ओके। willing to learn. अभी इस एज पे भी I'm willing to learn. I'm ready to take the hit also. That is not a problem. अगर मेरा फ्यूचर सिक्योर होता है एंड इस चीज पे आगे अगर मैं बढ़ सकता हूँ तो इवन एट दिस इज ऑल्सो आई एम रेडी टू वो move. 100%, वाई फ्यूचर विल नॉट बी सिक्योर? कोई अच्छी चीज में फ्यूचर कैसे सिक्योर नहीं होगा? शराब तो नहीं पी रहे ना मेहुल आप? अच्छी Correct, चीज कर रहे हो, राइट? अच्छी correct. चीज में डरना क्या है? मतलब पढ़ाई कर रहे हो एंड you're doing a US chartered accountancy, right? So I think it's a huge step towards a career, and at that So age if मेरा you do, many of them take it very positively also. Sometimes अच्छा पीआर बन जाता है। अरे correct. यार 25 45 years मेहुल तो क्या कर दिया भाई, हर जगह नहीं मीडिया तो में ये आएगा, नाउ 45-year-old पास सीपीए, दैट्स व्हाट इट इज। बिग फोर वगैरह में तो बिग दे फोर में नहीं मिलेगा मेहुल। नहीं आई विल टेल यू मिलेगा द ना, प्रॉब्लम बिग हाँ। फोर का है कि कल्चर का एक प्रॉब्लम है, कल्चरल हम्म, मिसमैच रहेगा क्योंकि पूरे लोग 25-30 साल के बंदे, आप 45 ईयर्स हो। सो करेक्ट, बिग फोर तो आपको जॉब नहीं मिलेगा मेहुल, दैट्स फॉर करेक्ट, श्योर। अगर करेक्ट। कोई बोल भी रहा है तो फेक कर रहा है, आपको हम्म, एनरोल कराने के लिए कर रहा है। और आप तो करेक्ट। सेल्स के ही बंदे हो तो आपको तो पता ही है। नहीं नहीं इसलिए सो बेसिकली आई मीन एक तो पहला था एक्सेप्टेंस, अगर कोई करेगा इस एज पे या नहीं करेगा, अदर देन बिग फोर अगर मैं अदर देन करता बिग हूँ। फोर तो बहुत सारे लोग करेंगे। बिग फोर का कल्चर, द प्रॉब्लम इज दे हायर ऑल जूनियर्स। वो ओके। लोग सीनियर्स बहुत कम लेते हैं, और सीनियर्स में क्योंकि इट्स अ टेक्निकल फॉर्म, आप हम्म, समझो ना, बिग फोर बेचता क्या है? इट सेल्स टेक्निकल नॉलेज, एंड करेक्ट, टेक्निकल नॉलेज कम्स विद एक्सपीरियंस।
जब हम एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेंगे, जैसे मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, एएम है, वहां पे हम लोगों को सीपीए एक्सपीरियंस लोग चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी काम किया ऑडिट टैक्स में। तो आपको मैं वहां पे लाऊंगा 45 ईयर के और कोई 25 वाला या 30 वाला सीनियर बंदा आपको क्वेश्चन कर देता तो आपकी ईगो का हट हो जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, एचआर था, थोड़ा सीनियर बंदा था, उसको मैंने कुछ बोल दिया तो वो बोला यार मैं इतना सीनियर हूँ, मेरे को ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। सो दैट कल्चरल मिसफिट हैपेंस एक्चुअली। तो वहीं पे बिग फोर्स आर नॉट सो कि भाई इनको हायर नहीं करना चाहिए बोल के, दैट्स द ओनली थिंग। मैंने वैसे देवदीप को प्लेस करवाया था मेरे एल्यूमनाई को, वो 38 ईयर ओल्ड था और एक 41 ईयर ओल्ड था, बट वो लोग सब फ्रेशर में गए थे 8 लाख 9 लाख के पैकेज में। सो इफ यू आर ओके विद पैकेज डिक्रीज एंड इफ यू आर ओके फॉर अ फ्रेशर रोल आल्सो, आई थिंक दे टेक इट पॉजिटिवली। और इसमें फिर इन लास्ट थिंग, इसमें क्या फिर अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचूं, सो कंसल्टेंसी काइंड ऑफ रोल सोचूं, सो इसका जो लॉन्जेटिविटी है वो ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, 100% रहेगा। हैविंग सीपीए का हैविंग तो माय हैविंग आप खुद का भी कर सकते हो करेक्ट। आराम से। आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, आप खुद की फर्म खोल सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी 6 साल की, वो आप देखो जरा, वो वायरल भी गया था लिंक्डइन पे। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। तो यहाँ करेक्ट। पे बंदी थी जो, आई थिंक आई पिंड आल्सो दैट पोस्ट, तो उसने खुद का हम्म फर्म खोला था। देखो जरा, 2012 लाइक से उस पे कुछ हम्म 1.5 लाख लोगों ने तो पोस्ट ही देखा था एक्चुअली। इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। ये बंदी ने क्या किया, खुद के यहाँ 70 लोग हायर किए हैं, देखो जरा। हम्म So I went for the, I mean, to meet her. So it's a huge success, right? You can open your own firm also. So CPA करेक्ट। gives you that privileges. EA also gives you that privileges. हम्म Okay. एंड इसमें रिमोट, अभी रिमोट से स्टार्ट नहीं कर सकते ना आफ्टर हैविंग डिग्री? रिमोट का? रिमोट तो मतलब एक बहुत बड़ा स्कैम है एक्चुअली। अच्छा सो दैट इज व्हाट अच्छा। इज द प्रॉब्लम। ओके रिमोट इज अ बिग स्कैम। तो जो भी रिमोट कर रहे हैं तो पीपल आर हाँ नॉट ट्रस्टिंग दैट। दैट्स द बिग इश्यू एक्चुअली। ओके ओके। रिमोट So कहीं पे भी नहीं है। unless and until I am ready to take that hit in package and ready to move in this, ये चीजें मेरे लिए करना is not suitable. यस यस, अगर थोड़ा हिट ले सकते हो तो देन वेल एंड गुड। नहीं तो एक मिडल छोटा ईस्ट क्वालिफिकेशन कर सकते हो, जैसे सीएमए है। दैट्स अ हाँ गुड क्वालिफिकेशन कि भाई एक टेक्निकल चीज भी है बोल के बात करने के लिए, राइट? हम्म सो इट बिकम्स मोर रेस्पेक्टेबल। नहीं, एक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अंडर बेल्ट है, तो थोड़ा हम्म हायरिंग में इजी हो जाता है आपके लिए, है ना? अच्छा, CMA will be better मतलब या आपके यूएससीएम इज एनी डे बेटर, बिकॉज सेल्स के बंदे को हम्म प्लानिंग और फोरकास्टिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेक्ट पूरी चीजें तो पूरी रिपोर्टिंग से ही जाती है, राइट? करेक्ट करेक्ट। क्या हुआ है पूरे रिपोर्ट्स को जो पढ़ सकता है वो सीएमए 100% पढ़ सकता है कि क्या ओके रीजन है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, कौन से लोकेशन से सेल्स आ रहा है, क्या पे लीड का फनल है, फनल कितना छोटा है, ऊपर है, कहाँ स्टेज पे है। सो ऑल दिस हम्म। थिंग्स सीएमए वुड नो वेरी नाइसली। सो सीएमए लुक्स अ वेरी प्रिडिक्टिव, गुड क्वालिफिकेशन। करेक्ट, प्रिडिक्टिव थिंग्स टू हाँ, डू प्रेडिक्टिव प्रिडिक्टिव। एनालिटिक्स, आप समझो नेक्स्ट 3 क्वार्टर में मैं कहाँ जाऊंगा हम्म सीएमए के थ्रू, राइट? आई मीन नॉट सीएमए, आई मीन सेल्स में कहाँ नेक्स्ट 3 महीने कौन से लोकेशन से आएगा। मार्केटिंग हम्म से भी वो बात कर सकता है, ही कैन टॉक विद सम सेंस। मतलब हम्म आपको एनालिटिक्स आती नहीं है तो आप बात क्या करोगे? मतलब आपको रिपोर्ट्स पढ़ना नहीं आता, डैशबोर्ड बनाने नहीं आते, सीएमए इसको ये सब आता है। तो आई वुड से, करेक्ट और तो क्वालिफिकेशन भी सस्ता है मेहुल। तो इन दैट हाँ वे यूएस सीएमए इज अ बेटर चॉइस टू स्टार्ट, एंड ऑब्वियसली ओके यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, so it's a हाँ easier qualification also compared to CPA. So that could be a good start, Mehul. Okay. ओके। सो CMA के बेस पे आगे फिर मैं इस पे जा CPA भी सकता कर सकते हैं, फिर एक जॉब मार के फिर CPA करना, that would be a good strategy. CMA फिर CPA. Okay. हूँ? ओके ओके। Cool, थैंक Mehul. यू जी, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्रीपाल जी। Yes, Abhishek Singh, please go ahead. Am I audible now? Yes, yes, Abhishek, please go ahead. Yeah, hello, sir. So, my concern is, see, I have done engineering and then I have done executive MBA from university. Right now, I'm working in Big Four. I'm working in PwC. But मेरा concern ये, and I have close to 10 years of experience. But मेरा concern ये है कि right now मेरा जो role है वो it's more into finance side पे. अब होता क्या है कि लेट्स से इफ आई वांट टू मूव टू सम अदर बिग फोर, राइट, या किसी और बड़े कंपनी में, तो वो कई बार एग्जीक्यूटिव एमबीए को कंसीडर नहीं करते हैं। एंड देन आई हैव अनदर डिग्री, उससे छोटी डिग्री, दैट इज बीटेक इंजीनियरिंग, राइट? सो मेरे लिए अभी क्या बेटर होगा टू शो समथिंग फ्रॉम फाइनेंस और अकाउंटिंग तो पर्सपेक्टिव कि आई हैव अभिषेक, समथिंग। जी तो आई थिंक यूएससीएमए इज गुड। ये एग्जीक्यूटिव एमबीए भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो सबको पता है वो भी, कि एग्जीक्यूटिव एमबीए में तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, वो फुकट का आईआईएम का टैग मिल जाता है।
नो ऑफेंस अभिषेक जी टू यू, Yeah, बट yeah, मैं yeah. एक I agree नॉर्मली बोल because रहा I हूँ। will. अब कहीं Yeah, मेरे को yeah. गाली मारेंगे सर आप मेरे एमबीए को ऐसा बोल रहे हो। देखो कैसा है, एक नॉर्मल एमबीए, जैसे मेरा दोस्त है, लाइक ही इज माय बेस्ट फ्रेंड करण बोल के, आई एम इंदौर से किया उसने, और इतना हाथ पर मारा, कैट में 96 परसेंटाइल लाया, फिर आई एम इंदौर गया और रेगुलर एमबीए किया। और यहाँ से मैं हूँ, मेरे को रोज मेल्स आते रहते एग्जीक्यूटिव एमबीए के, करो भाई 3 महीने 6 महीने में आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए मिल जाएगा, एक 4-5 लाख दो। बट क्या है, रेस्पेक्ट मिलता नहीं, क्योंकि रिक्रूटर्स को सब पता रहता है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या है और एक वहीं रेगुलर पे एमबीए वो क्या हो रहा है, तो वहीं पे वो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कई बार एग्जीक्यूटिव एमबीए कंसीडर नहीं करते हैं। देन आई हैव है। बीटेक, और फिर वो बीटेक की वजह से फाइनेंस में थोड़ा सा वो मैं होता क्या है बोल कि रहा हूँ ना अभिषेक जी, आप बीटेक के साथ आप यूएस सीएमए कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है। तो इफ यू आर इन फाइनेंस सीएमए सूट्स यू बेटर, इफ यू आर इन अकाउंटिंग देन यूएस सीपीए सूट्स यू बेटर, क्योंकि आप नहीं, ऑलरेडी अकाउंटिंग फाइनेंस में नहीं, मेरा काम कर मोर रहे हैं। फाइनेंस में है, टेक्नोलॉजी या साइड है बट फाइनेंस इट्स में तो फाइनेंस। यूएस सीएमए इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू अभिषेक जी, एंड इंजीनियर वाले बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन माइटी सक्सेसफुल आल्सो। सो यू हैव अ टेक डोमाइन, यू हैव अ एनालिटिक्स डोमाइन, तो आपके दोनों स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, एक जगह अकाउंटिंग एनालिटिक्स, एक जगह टेक्नोलॉजी, और एआई के वर्ल्ड में तो आप मतलब फाड़ डालोगे अभिषेक जी, समझ में आ रहा है। सो यू विल जस्ट Yeah, नीड because my लाइक technology is also more on AI side, SAP side, so इसलिए I बस was a little bit concerned. Okay, एनी so डे, और and आपके one पास more. पीडब्ल्यूसी का ब्रांड भी है, सो यू हैव अ Yeah. ब्रांड, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द क्वालिफिकेशन, सो यू आर ऑल सेट टू ग्रो अभिषेक जी, देयर इज नो वन Okay. कैन हु कैन स्टॉप यू। And one more thing, because I joined little late today, हो सकता है maybe it was discussed in the beginning. अगर मैं US CMA करता हूँ, तो जैसे आपके यहाँ से मैं enroll करता हूँ, तो what is the validity I'll get? Like it's like जो coaching की validity रहेगी once I enroll, is it for 1 year, 2 year, मतलब कितने time frame में I देखो should pass सीएमए में with the तो है ही exam? 2 पेपर, तो 2 इयर्स की वैलिडिटी रहती है, 24 महीने की। बट आपको Okay. अगर लगता है यार श्रीपाल मेरे को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो हम लोग 6 महीने और एक्सटेंड भी करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइडेड, देर आर सम जेन्यून Okay. रीजंस। बट नॉर्मली 24 मंथ्स लगते नहीं है यार, लोग 6 महीने 7 महीने में खत्म कर देते हैं। तो अगर मेरे 24 मेरा महीने लग रहे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, राइट, है ही दो मेरा पेपर। क्या कंसर्न था ना, क्योंकि जैसे मेरे को अकाउंटिंग या वो उतना बेसिक नहीं है, तो हो सकता है कि मे बी आई कैन ट्राई, हाँ जैसे तो शायद हम लोग मैंने देखा था अभिषेक जी कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं पहले, वी स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री वो पढ़ाते हैं, फिर देन वी गो इनटू द कोर क्वालिफिकेशंस। ओके। ओके, सो यू मीन टू से, अगर मतलब इफ आई फील कि मैं शायद मे वाले विंडो के लिए आई एम नॉट रेडी, तो आई कैन एनरोल इन नेक्स्ट विंडो एज वेल, बिकॉज 2 years तक इट इज वैलिड, करेक्ट? Yes, but you should take the admission now, right? And the software is valid for 2 years. Your exam is valid for 3 years. मतलब आप 3 साल में CMA पास कर सकते हो. You have the time limit of 3 years. The moment you take the admission and write your first exam. Okay. ओके ओके ओके, गॉट इट। बट बेटर है आप 2 साल मत सोचो यार, 1 साल का ही सॉफ्टवेयर है समझ के पढ़ो भाई। 2 साल बोलोगे हाँ, तो आप राइट राइट पढ़ोगे ही नहीं एक राइट, अक्षर भी। ठीक है ना, आप तो टोटली यही समझो कि भाई 1 साल का ही है। ठीक है, राइट राइट राइट। एंड व्हेन इज द नेक्स्ट बैच गेटिंग स्टार्टेड? बैच स्टार्ट हो रहा है, ये अभी आने वाले महीने में ही है। ओके। एंड टुमारो इज द फर्स्ट क्लास एक्चुअली, सो इफ यू वांट यू ओ, कैन एनरोल, और आप एक क्लास भी देख सकते हो वैसे। ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट। या थैंक यू। या थैंक यू सो यस परमीत भाटिया, गो अहेड। Hello. यस परमीत, गो अहेड। Yeah, hi sir. Am I audible? यस यस, Sir, actually, I have graduated in 2024. After that, I am currently working in Gentech in AML profile. Actually, I want to go in finance and I'm looking for CPA. But I have to do while working, and my job timings are rotational. So I'm confused. I be able to do it or not? ओके। तो परमीत, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन जनपैक? Sir, I have joined this December last year, हाँ तो आराम 2020. से, मतलब तो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, तो फर्स्ट 2-3 साल तो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे वो लोग। तो आई थिंक यू कैन टेक एडवांटेज एंड डू द एग्जाम एंड पास द एग्जाम। तो काम तो कम रहेगा फर्स्ट 2-3 साल, बिकॉज यू आर जस्ट ज्वाइनिंग इन एंड ऑल, राइट। आई डोंट थिंक सो दैट इज मोर स्ट्रेसफुल परमित, राइट। ऊपर से सीपीए में है ही 4 पेपर यार, मतलब इट इज नॉट लाइक सीए जहाँ 20-20 पेपर है ना। सो वर्किंग प्रोफेशनल हैज ओनली 4 पेपर, सो यू कैन तो इजिली पास द एग्जाम व्हाइल परस्यूइंग जॉब एंड ऑल। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट सीपीए, राइट, बिकॉज देर आर नॉट मेनी पेपर्स। सो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो यही क्वालिफिकेशन है, क्योंकि अब इंडियन सीए में तो आप करना बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट है, गेटिंग इट परमित। सर मैंने इंडियन मतलब मैंने सीए स्टार्ट किया था
बट एक्चुअली मैं नहीं कर पाया था। राइट, वो होगा भी नहीं क्योंकि जॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाए। बट ये आपने बिफोर जॉब किया था या आफ्टर जॉब था? बिफोर जॉब किया था सर, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे सर, फिर मैं नहीं कर पाया, आगे कंटिन्यू नहीं, नहीं नो कर इश्यूज पाया। परमित, ये सीए उतना डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक यू कैन इजिली डू दैट। आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम परमित। ठीक है, वेरी मच डूएबल बिकॉज है ही 4 पेपर एंड एमसीक्यू हाँ है, जी, 50% तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और केस लॉ हाँ जी, ओरिएंटेड है। एंड आई डोंट थिंक सो ये थियोरेटिकल भी इतना है, तो आराम से जॉब के साथ तो इजिली कर सकते हैं। आई थिंक 12 मंथ्स का टारगेट लगाओ, हर क्वार्टर एक पेपर लिखना है एंड 12 महीने में खत्म करना है परमित। ठीक है, हाँ जी सर, मेन यही है कि 12 मंथ्स के बिफोर करना है। और मेन सर ये था कि टाइमिंग और शिफ्ट रोटेशनल रहता है, तो थोड़ा सा मतलब ये हाँ था तो कि अपने यहाँ रिकॉर्डेड कोई भी है परमित, क्लासेस। यू डोंट नीड टू वरी। तो कोई लाइव क्लास आप मिस कर दे तो पूरे रिकॉर्डेड क्लास। और ये ऐसे नहीं, आप जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आप ग्रैड ये सब, ये पूरे दूसरे राइवल्स राइट, दे सिंपली प्रोवाइड रिकॉर्डिंग। लाइव क्लासेस तो होते ही नहीं है वहां पे। सिमंदर इज ओनली इंस्टीट्यूट व्हिच डज लाइव क्लासेस फॉर सीपीए, सीएमए, ईए, एसएससी, राइट। तो हम लोग क्या हाँ करते हैं, जी। जो लाइव क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो हम्म, ऐसा नहीं है कोई स्टूडियो में आके कोई मस्त ब्लेजर में से बोलते जा रहा है और कोई बंदा पूछ ही नहीं रहा है उसको। ये लाइव क्लास, इंटरैक्टिव लाइव क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। सो यू नीड टू हाँ जी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड क्लास एंड अ लाइव इंटरैक्टिव क्लास गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट। हाँ जी जी। तो वहां पे बच्चे पूछते रहते हैं फैकल्टी को, फैकल्टी आंसर करता है। सो इट्स अ मोर इंटरैक्टिव लाइव क्लास। और ये साल में 4 से 5 बार हम लोग बैच रन करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी बिग यूएसपी ऑफ समंदर, कि हम लोग सिर्फ लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वैसा नहीं करते। लाइव क्लास तो लेते ही है 4 बार साल में, और फिर रिकॉर्डेड भी क्या करते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई स्टूडियो बेस्ड, ब्लेजर बेस्ड वैसे क्लासेस नहीं है परमित। ठीक है ना। हाँ जी। एंड आई वुड एंड सजेस्ट सर, परमित इन योर केस आप थोड़ा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से भी स्टार्ट करो, क्योंकि आपने सीए हाँ में भी जी, थोड़ा फ्लंक हुए हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रश अप योर अकाउंटिंग नॉलेज। और थोड़ा बेसिक्स हाँ ऑफ जी, अकाउंटिंग पे भी थोड़ा आप पूरे वो लेक्चर्स करके ही आप सीएमए के मेन, सीपीए के मेन लेक्चर्स पे जाना। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, डन श्योर, डन परमित, थैंक यू। सर एक और डाउट था। ओके, या टेल मी। सर मतलब फिर सीपीए के बाद मतलब बिग फोर में लगने का कुछ चांस हो अरे सकता है? भाई वो मेरे पे छोड़ दो भाई, पास होने के बाद आई नहीं विल टेक मतलब केयर, वैसे डोंट नीड सर, टू वरी। जैसे नहीं नहीं आप कहते हैं एज वाइज कुछ रहता है, कुछ 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 भी नहीं एक्सपीरियंस है। वाले। आपका क्या एज है परमित अभी? सर मेरा 22 है। 22? अरे यार, 22 तो भाई आराम से हो जाओगे तुम। मैं तो 21 में ही पास किया था सीए, तो आई थिंक यू कैन इजिली गेट 22 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है परमित। ओके सर, आई एम ठीक फीलिंग है, कॉन्फिडेंट। हाँ जी, डन डन परमित, थैंक यू। थैंक यस, यू, थैंक मेघा जैन प्लीज गो अहेड। Yeah guys, we still have a lot of hands, let's be quick. Yeah, Megha Jain please go ahead. Hello, sir. Yeah Megha, Jai Jinendra बोलिए। Jai Shri, sir. So actually, I just enrolled in CPA course with Okay. Simandhar only. And so I have a doubt like your team and evaluate my credentials and it's 150 right now because I have done my BCom honors with MBA and currently working with American Express in accounting COE department. Okay. So it's like I have a doubt. You just mentioned in starting of the call, after this year in 2026, we need a 120 credentials only. Yes. Yeah. So I am already qualified for that, right? So I don't need to do any bridge नहीं course नहीं 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 also. मेघा, आप तो ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हो, आप तो ऑलरेडी 150 पे हो। सो आई डोंट थिंक सो एनी कोर्स और एनीथिंग यू शुड डू, इवन इफ इट हैव बीन 120 आल्सो। आई मीन अगर वो 150 भी रहता नेक्स्ट ईयर, स्टिल यू Yes, वुड sir. हैव easily met 150, right? Prashant is there in our session, he is our evaluation spock, he was answering also in the session right now. So as I've shown you in the Samandar screen, right, हर दिन हमारे evaluation sessions भी होते हैं सुबह और शाम। अब जब आपका evaluation हो गया तो आप किस लिए वेट कर रहे हो? मेगा एग्जाम क्यों नहीं लिख रहे हो, पहले वो बताओ मुझे। So I today enroll with Simandhar. So I अच्छा just decided. ओके ओके, Yeah. जस्ट एनरोल Yes, sir. टुडे हो So, गया। but ठीक yeah, है। but so your team mentioned this thing like I have 150 credential, but I have less accounting credits. हाँ, क्योंकि देखो एक 150 रहता है, अगर आपके पास अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स नहीं है तो आपको ब्रिज कोर्स जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई माय टीम इज लिटिल केयरफुल कि यार सिर्फ 150 120 से नहीं चलता है, यू शुड हैव सफिशिएंट अकाउंटिंग क्रेडिट्स आल्सो। तो वो भी एक रहता है, अगर आपके पास अकाउंटिंग है ही नहीं तो 120 150 डजंट मैटर, यू स्टिल नीड टू डू अ वन ब्रिज कोर्स। ओके। But so I have completed my BCom, so I have some accounting, हाँ, तो accounting आप एक subjects बार also टीम से there. वैलिडेट कर लेना।
कि अगर बीकॉम का भी है तो एनीवेज मॉर्निंग और इवनिंग उनके सेशंस रहते हैं. आज इवनिंग सेशन में एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लेना. और हमारा एक हेल्प डेस्क टिकट रहता है मेगा. यू रेज अ Yes, टिकट sir. देयर एंड काइंड ऑफ I think we have here someone. Prashant is there. Prashant, you're there? Yes, sir. Yeah. So, do we have a case of Mega Jain today, or how is it like? Yes, sir. So, even if it's from BCom, evaluation depends on a case to case, sir. Okay. So again, they need to do a bridge course if the board is given as a certain state board, which will make the student eligible for the exam, though they don't have minimum accounting But credit. she can sit for the exam, right? Yes, yes, absolutely, sir. So Mega, what he's So, talking about is you can sit for the exam. License का बात देखेंगे. नेक्स्ट ईयर 120 हो गया तो फिर बात का बात देखेंगे. अभी तो एग्जाम तो आप निकलो और पास हो जाओ पहले. फिर बात का बात लाइसेंस का देखेंगे. ठीक है ना? Okay, sir. So right now I don't need to do a bridge course. Is that? Yes, So but make you need to be careful कि after you pass then afterwards you need to do. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पैरेलली करना है तो भी कर सकते, क्योंकि ब्रिज कोर्स में जो सीपीए में वही है, तो कोई दूसरी एग्जाम बोल के नहीं है. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट वी हैव इन द सीपीए सिलेबस. So whatever we have in CPA 4 subjects, the same thing is there in the bridge course. So you are not studying anything additional. And ऊपर से Yeah. it's an online exam. और फेल भी होते तो हम थोड़ा एडजस्ट कर देते, बट अगेन आई डोंट वांट टू टेल इन द दिस वन, बट या थोड़ा क्योंकि पेपर हम लोग ही बनाते हो. सी इट्स नॉट सच अ सीरियस थिंग बिकॉज यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग, राइट? सो दे आर ऑल्सो अवेयर यूनिवर्सिटी पीपल कि आप सीपीए परस्यू करें. सो यू ऑल आर सीरियस स्टूडेंट्स. एंड जस्ट टू लेट यू नो, Sanjay, the CEO of MX, right? We know Yes, sir. him Sanjay also. Khanna. So he's a good friend of Vishal Jain. He's one of our mentor. So Vishal is MD of Accenture. So please do Oh, tell hello once you meet him. yes, sir. Definitely. Thank you, but Mega. yeah, Chalo. Mega, So just right now it's fine, right? Prashant, she can sit for the exam. If I'm sir, yeah, we'll have to just check her documents. So Mega, please, please raise a support help desk ticket with your documents, and anyhow, I'll ask the team to reach out to you. Okay? नहीं, reach out Yes. immediately. No, Mega number Yeah, दे दो हाँ, प्रशांत को. that's what. प्रशांत है सर straight away. मेरे पास है सर. I अच्छा, think okay. I have it. नहीं तो चैट बॉक्स में मेरे को दे देना मेगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. चलो Yeah. Mega, thank you. Yeah, Thank you, sir. Payo Casio. Yes, please go ahead. S Payo and Casio. I'm not able to hear Payo and Casio. Hi, am I audible? Yeah. Okay, so sir, thank you for the opportunity. And I have completed my BCom in the year 2022. So I am confused whether I should go for CPA or CMA or EA. So can you please guide me on this one? Okay. And you are from India only, right, Payo? Yeah, I'm from India. I couldn't hear you. Yeah, I'm from Manipur state. Okay, okay. Now I got it. ठीक है. So I think BCom you are eligible for CPA, Payo. So I don't think so it's a problem at all. So you can put your number in the chat window, and one of our sales team member would get in touch with you and immediately start sharing the details and all. But I would request you to give your education document so that they can validate that you need to do a bridge course or not. If at all Okay, you will need to do a bridge course also to get the additional 30 credits, because BCom gives only 90 credits. Okay. okay. So I think So you can like, just put your number in the chat window so that the team can reach you out by you. sure, I'll do that. And so I have a question. Like, if I go for kind of like CMA, and since currently I am working in BPO, so like I think those experience will not be counted in this CMA or CPA. Is that right? Okay, so CMA is also good. I don't think so that's a problem for you, Payo. So you can start off with CMA first and then go for CPA also. It's a good strategy. Because if you're little here and there, ki bhai, I will be able to prepare or not. So I think going with US CMA is a good strategy. Then go for CPA also is fine. That should not be an issue at all. Okay. And Yeah. so for that, for the experience of CMA, that will be counted when I, like willing to take this CPA, right? The experience for CMA will be counted in the CPA Yeah, yeah, for yeah. next year. Till it is a relevant experience, it is considered. So you don't need to worry. Okay. Okay, then thank you so much. And I think I'll be able to manage even though I am working in kind of BPO, right? Yes, yes, yes. Okay, right. Then thank you so much. Thank you for Thank the you. opportunity.
Thank you, Payo Casio. It's a good name, huh? Yeah. So, who's this? Divesh, Nikhil Heche, and Divesh Dubey. Can we unmute Nikhil and Divesh? Hello, sir. Yes, sir. Yeah, Nikhil, go ahead. Sorry. Yeah. Hi, sir. So I just completed my UG right now, BCom, and I'm very much confused between CPA, CA, and US CMA. So basically, my thing is going to the finance in the future. I'm just 21. Right, hearing to all of them speak, it's like too overwhelming for me. So I just wanted to know from your perspective, your view, what is good for. यार निखिल 21 में तो आई पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी so I think you should not even wait a second also and straight away start studying for CPA because you are eligible for CPA because you have completed BCom. So Yeah. my advice would be to go for CPA. CAs you are too late to the मतलब रेलवे ट्रेन चले गई है दैट इज व्हाट आई वुड से निखिल तो आप Okay. पटरी से ट्रेन चले गई है अब खत्म अब से वेट करना रहेगा तो दैट इज व्हाट इज सीए डिग्री नाउ बिकॉज इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट्स 4 साल का फिर से आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा निखिल सो 4 years ऑफ हार्ड वर्क अगेन so it's not a easy joke and then there is chance that you might fail and another 4 years also so Yeah. then it will become like half CA series which you might have Yeah. seen on Netflix तो Yeah. वैसा ही सीरीज आपका भी बन जाएगा so my request would be you start off with CPA it's a terrific qualification there is no doubt about it I think you should go for it because you're already a BCom normally मैं USCA में either experienced people को recommend करता हूँ या pursuing BCom को recommend करता हूँ बट अगर आपने बीकॉम खत्म कर लिया है एंड फाइनेंस इज नॉट एन इशू देन सीपीए इज अ बेटर चॉइस फॉर यू निखिल ओके Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. go for it man and finance good that and why do you want finance why are you looking for finance I'm just interested in finance field. and Like, how did you know that you're interested for finance actually, it's basically based on BCom subjects. What I had, I know it's nothing related to so what do you do whole day nikhil right now, I'm applying for jobs as well. I got in campus recruitment, but then it no was no for but how do operations. we no how do we trust that you are interested in finance देखो अगर मैं कैसा था मेरे पे ट्रस्ट करना है कि मैंने फाइनेंस इज समथिंग व्हिच आई लाइक सो आई विल रीड न्यूज़पेपर्स ईटी नाउ times now, this, that. I'll track stock market and all. So, Nikhil, what are you doing at your end to put efforts to understand finance? That's what was Yeah, my question. actually, I'm a bit into stock market, so I'm हाँ going. बस हाँ ठीक है फिर ठीक है देन सीपीए मेक सेंस ओके थैंक यू निखिल Yeah, उसके बाद thank. अगर टाइम है तो सीएफए भी कर लेना इट्स अ गुड क्वालिफिकेशन तो Yeah, ओके yes, वी sir. डोंट प्रोवाइड बट इट्स अ गुड क्वालिफिकेशन Yes, sir. Thank या you. यस दिवेश गो अहेड दिवेश डुबे Hello. Hello. यस दिवेश डुबे प्लीज गो अहेड Yeah, I'm audible, sir. यस दिवेश So, sir, I completed my master's and I have total 4 years of experience in accounting and finance. So, currently I'm working professional. So, I'm planning to do EA. Actually, one of my senior colleague working in a EY. So, he told me that if you don't have practical experience, don't jump for directly EA. Like, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यूएस टैक्सेशन के रिगार्डिंग तो आप जा सकते हो यूएससीए के लिए ओके और like you will face difficulty at the time of job and other things. सो व्हाट इज द क्वेश्चन दिवेश Like सर मैं ये पूछ रहा था कि ये करने के बाद like jobs and all मिलता है क्या like difficulties होती है ऐसा ये पूछ रहा था सर. मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बोला था जॉब उसको ही डिफिकल्टी होता है जिसको उसके घर पे ही जॉब चाहिए तो अगर आपको पूरी इंडिया में कहीं भी जाके जॉब करना है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा द प्रॉब्लम वाई द डिफिकल्टी इज उनको जाना नहीं है उनको सिर्फ हैदराबाद में चाहिए बैंगलोर में चाहिए मुंबई में चाहिए ऐसे कंडीशंस के साथ जॉब नहीं मिलेगा बट अगर आपके पास ऐसे कंडीशन नहीं है तो मैं आराम से प्लेस करवा सकता हूँ दिवेश दैट इज व्हाट आई कैन टेल ऐसा Like कोई sir एल्यूमनाई नहीं है जो समंदर से अनप्लेस्ड है दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू जितने भी लोग पास हुए currently सबको हम लोग ने प्लेस करवाया और अगर मैं प्लेस नहीं करवा सकता तो फिर इंडिया में कोई भी प्लेस नहीं करवा सकता दैट इज हाउ आई वुड से बिकॉज द कनेक्शंस व्हाट वी हैव आई मीन दे आर लाइक ऑलमोस्ट ऑल द यूएस कंपनीज नो अस ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हम लोग को नहीं पहचानती होगी इंडिया में सो दैट इज व्हाट आई वुड से इन द यूएस फील्ड ठीक है like currently sir I'm working for India as well as for Singapore. I have total 4 years of experience and मैं एक proprietorship भी run करता हूँ like consultancy tax consultancy. सो फॉर इंडिया एंड सिंगापुर के लिए सर मैं सिर्फ जीएसटी एंड ऑल ये सब देखता हूँ तो लाइक
I'm interested in like in finance mostly. मुझे CMT करना था, but it's bit costly, so I go for the EA. Like ओके, नहीं ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये इज बेटर इन योर केस। और कंसल्टेंसी में भी हो तो खुद का कल फर्म खोलना है और बाहर का काम भी लाना है, तो दिवेश दैट्स अ गुड डिग्री गेटिंग इट। सो आई वुड okay, स्ट्रांगली sir. सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर इट। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. या वाज दैट निखिल एच इज कवर्ड राइट? या राहुल राव, प्लीज गो अहेड। राहुल राव। राहुल, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। राहुल, ये तो नाम तो सुना ही होगा जैसा किस्सा हो रहा है। Am I audible? यस राहुल, प्लीज गो अहेड। Oh, very, very good evening, sir. How are you? गुड इवनिंग। या आई एम डूइंग ग्रेट। 1 hour 45 minutes हो गया, अब तो I डूइंग know, I know. फैंटास्टिक। I've been waiting since 45 minutes. Actually, I texted in chat box also that I'm I waiting for am a call to speak to you. so sorry, but this is a problem whenever I take a webinar, यही हालत I होती है। know, I know, I know that. I don't know कितने Sir, लोग मेरे को extremely गाली sorry देते to take होंगे, it. ये टाइम नहीं दे रहा है। It's a lot of pressure on your shoulders, right? To take each and नो नो every नो नो, call and आई explain एंजॉय them दैट। about the आई strategies. एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। या मतलब मैं पैरेलली टाइप भी कर रहा हूँ, so that's not a problem. So, sir, first of all, thank you so much for organizing this call to understand each and every person pain about how to attend CPA, CMA, how to qualify the studies, everything. So, my question is, I left my studies 15 years back. I'm a Amazing, working professional now. where I are you work working for now? a corporate company. I hold 15 years of experience into account receivable and credit control. Okay. So I enrolled for CMA and I've been attending CMA Part 2 classes on every weekend, and probably in next 15 minutes I have to attend my class. And how is it, Rahul? Unfortunately, Because all of them are there here unenrolled. आप पॉजिटिव नेगेटिव सब फीडबैक दे दो भाई, ये लोग कुछ पढ़ा नहीं रहे या क्या कर रहे हैं, ताकि सबको मालूम no, no, पड़े क्या चल रहा absolutely है सिनेमा में। amazing, classes, sir, because live classes, revision classes, baker classes. So, I'm attending, everything, but only thing is that where the point I'm lacking is I don't have sufficient time to study the class and revise the pattern, revise the studies, revise the books, because as as I said, I'm working for a corporate company and my shift time starts from 12:30 to night 9:30, and by the time I reach home will be around 11:30, and maximum 12, by max 12 sometimes. And next coming days अभी daylight starting भी होने वाला है, so probably 1:30 shifting and 10:30 or 1:30 12:30 by the time I reach home. So I'm facing a lot of difficulties to study, to attend all these things. So as you already mentioned in couple of what you call calls now about basic of accounting. So I just wanted to understand where should I attend this basic of accounting, because I Okay, was very Rahul. good at mathematics in my SSC SSC board. I scored somewhat 80 plus score in my mathematics. After joining the college and a degree, I lost my grip on mathematics. ओके ओके। सो राहुल, पहले बात तो ये है कि लाइफ में कभी भी टाइम नहीं है या टाइम कम है, वर्ड्स ऐसे थोड़े नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं, वो नॉर्मली हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज टाइम तो सबके पास रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि Yes, sir. किसी के पास टाइम नहीं है। कल अगर देखो 1:30 बजे मैं जब आया था परसों ही बैंगलोर से, 1:30 2 o'clock आई Mm-hmm. स्लेप्ट, सुबह 6 बजे उठ गया Mm-hmm. वापस, क्योंकि किड्स उठ जाते हैं 5:30 6 बजे, तो मैं तो मेरा काम स्टार्ट कर दिया वापस। आई डोंट थिंक सो टाइम हाँ, निकालना इज अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ इजी थिंग टू टेक आउट। द मोस्ट इजी थिंग अगर कोई कर सकता है लाइफ में, वो है टाइम निकालना। सो वी हैव I सो understand. मच ऑफ I've टाइम, been राइट? आप देखो, habituated. आप 1:30 बजे सो रहे हो राहुल, आप 12 बजे तो जॉब पे जाते हो। चलो अगर मैं 6 घंटे भी लगा लूं तो 7:30 8 बजे भी आप उठते हो, तो यू स्टिल हैव 1 hour। खा भी लो, मतलब ब्रेकफास्ट तो 1 घंटा कोई करता नहीं, तो चलो आधी घंटा ब्रेकफास्ट कर लिया, आधी घंटा वॉकिंग कर लिए और मेडिटेशन कर लिया, ब्रीथिंग कर लिया, तो यू स्टिल हैव टाइम फ्रॉम 9:30 onwards to 11:30, 2 good hours, right? And half an hour say for travel and all.
Even 2 hours, which 1.5 hour also, if you put it every day, US CMA will be easily completed in less than 12 months. That is what I can tell I'm you. giving 1 hour actually commute में जो traveling अरे में होता है बहुत मेरा. टाइम है, 1 घंटा. But you need to So put consistently, Rahul. और Saturday yes, Sunday you need to put 4 hours. फिर slowly उसको 8 hours yes. करना है, फिर 12 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 18 घंटे. एग्जाम के 1-2 दिन, उतना ही है. सर ठीक उसी है. चीज के लिए मैं अभी आज अटेंड हुआ हूँ टू अंडरस्टैंड द मेंटरशिप, नहीं लाइक वो हाउ धीरे डू धीरे हाउ डू करेंगे, आई राहुल. हैंडल दिस देखो, सिचुएशन. आप अगर मैं आपको अभी बोल दूं और डरा दूं 8-9 घंटे हर दिन पढ़ना है तो आप डर जाओ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज यू नीड टू टेक इवन स्लो स्टेप्स. क्योंकि चक्कर क्या है, माइंड इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव थिंग. एंड वो बोलते हैं ना, माइंड इज डेविल. तो वैसी हालत है अभी हम. तो फर्स्ट यू नीड टू कन्विंस योर माइंड टू गेट हैबिचुएटेड टू स्टडिंग. तो पहले आप शॉर्ट गोल्स लो, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, नॉवल के जैसा पढ़ते रहो. तो एक बार आदत बन जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा. फिर स्लोली स्लोली वही कर सैटरडे रहा हूँ संडे सर. को 4-5 घंटे होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. यस. और एक चीज आपको देखना है कि पार्ट 1 से पहले आप बीमार हो जाओगे 2 हफ्ते के लिए, एंड पार्ट 2 में 3 हफ्ते के लिए. ऐसा आपको बीमार होना पड़ेगा ताकि आपको लीव मिले. तो लीव इज नहीं सर, मैंडेटरी. एक्चुअली मैं मेरे को बूस्टअप हुआ था आफ्टर अटेंडिंग फिनोवेटिव सेशन इन हैदराबाद. Oh, So glad that basically you I'm like from that session. Hyderabad, yeah, I'm from Hyderabad. I've been to your campus in office and I met couple of people there. I registered, I enrolled, and the main what do you call reason to enroll for CMA is to like not to get in B4 or B4 or B6, just to certified with the certain what do you call courses which can boost my experience actually. नहीं नहीं राहुल, see, easily you can do it. I would even I think Prashant is there in the session. You can put your number there, right? And Mm-hmm. good that who all have come to in this webinar. I have taken एक प्रण लिया है कि उनको पर्सनल मेंटरिंग मैं करूंगा. तो आप अपना नंबर भी प्रशांत को छोड़ दीजिएगा. तो आई विल टॉक टू यू पोस्ट सेशन ऑल्सो. ठीक है ना. ठीक है सर, डेफिनेटली सर. डन. ओके. ऑल द बेस्ट राहुल. और जैसे मैंने स्ट्रैटेजी एंड बोला एंड था, आप शुरू कर दो. 1-1 घंटा हर दिन पढ़ना श्योर, स्टार्ट कर दो. एंड कर वुड रहा बी हूँ ग्रेट सर, कर इवन रहा इफ हूँ यू सर, कैन उसके मीट लिए मी. You can meet me physically also in Hyderabad. That would be great. Next week, agar I mean after 18th or 19th, you can come down once. That's perfectly श्योर fine. डेफिनेटली सर. the moment I board my cab in the morning or in the night time, I just open my tab and I'll do all the revision classes from Baker actually. करेक्ट. सुपर. बस उसको ही थोड़ा और बढ़ाने का है. 3-4 घंटे और पढ़ना है. हाँ वही. और नेगेटिव बोलना नहीं है हाँ कि टाइम नहीं है. दुनिया का टाइम है. लेट्स थिंक पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट स्टडी. मतलब I've been habituated like कभी स्टडीज छोड़ दिया है, 15 साल हो गए हैं, तो लाइफ तो वापस आफ्टर हैबिट बना मैरिज देंगे. आफ्टर आप सन. स्टडीज दुनिया का करेंगे तो हैबिट बन जाएगी. हैबिट को चेंज करना कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 21 दिन वही यस, काम करना दैट्स है. ट्रू. एंड लेट्स डू इट. एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रुप में मैंने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया था. वहां पे मैं रोज डाल रहा हूँ Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें? हमारा एक नहीं सर, पर्सनालिटी अभी तक तो डेवलपमेंट उसमें. ग्रुप है. अभी Day 5 चल रहा है. आज उसमें मैंने हर दिन डाला है. Day 1 में आज हम 3 घंटे पढ़ेंगे. Day 2 में 4 घंटे पढ़ेंगे. एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रुप है टेलीग्राम में. तो उसमें हम लोग रोज नहीं, कॉन्टेस्ट रन उसमें कर तो रहे हैं. मैं एनरोल नहीं हूँ सर, बट आई एम एनरोल्ड फॉर Please CMA join 2, now. 1 एंड. Whatever study श्योर groups श्योर. are there, LMS में, please ensure that you join all the Telegram study group. अगर आप study group join नहीं करोगे तो आप self study करोगे सिमंदर में. So please ensure that you join all the Telegram study groups because that are the USPs of Simandhar. तो वहीं पे हम लोग पूरी चीजें करते हैं, सब डालते हैं, राइट. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप जब भी एनरोल होते हो तो फर्स्ट थिंग इज टू ज्वाइन द टेलीग्राम स्टडी ग्रुप. स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रुप इज मोर अबाउट, आई पर्सनली कीप चेकिंग दैट ग्रुप अलॉट, राइट. तो अभी हमारा Day 5 भी चल रहा है. तो आप Day 6 से पार्टिसिपेट कर लीजिए. अभी और 16 दिन है. आई रन दैट हैबिट ऑलवेज फॉर 21 डेज. लास्ट मंथ मैंने 4 डेफिनेटली के सर. क्लासेस लिए थे. इस मंथ हमारा 21 डेज का प्रोग्राम चल रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. सो यू कीप पार्टिसिपेटिंग इन दैट. ओके. Definitely, sir. Definitely, sir. And thank you डन so राहुल. much for your call, sir. Actually, you inspire a lot of people actually on this call. The way Always, you always. And mentor you guys are people. inspiring me. नहीं नहीं good. Good. Thank you so Thank you. much, Thank sir. you. That's it. Thank you so much. I'll definitely try to meet you once in Hyderabad. Sure, sure. And please don't forget to join all the study groups, huh? Especially PD group and CMA Part 1, CMA Part 2. There is a CMA exam experience group also. So please ensure that you join all those study groups. Okay. No, right after this call, I'll post Telegram request for all the Sure, sessions. sure. Thank you. Thank you, Ron. Take care. Yeah. Thank you so much, sir. Anisha, Anil. So there are two names there. Anisha. Can we unmute Anisha, Anil?
We aren't able to hear Anisha there. Anisha, Anil. Sri Vamshi Ganga, please go ahead. Host, can we do it a little faster actually? Anisha, Anil, Sri Vamshi Ganga, Abhishek Jha. Can we unmute all the three, please? Hello. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sai Vamshi, go ahead. Yeah, so sir, actually, I was having a query. I'm from CA background. I thought of having enrolling for EA or USC CMA. Okay. As I'm having already financial related, what do you say, idea, which one would be better? No, you're already studying for CA, right? Yeah, I'm already studying for CA. I mean, as we can see, the papers are getting tougher and tougher. So I thought of shifting to some other professional course. No. So did you write the exam of CA or not, Vamshi? What is it? Yeah, I've written 2 times, so I could not clear actually. Okay, तो 2 attempt हो गए, right? So I think you can shift to enroll agent, Vamshi, because Okay. you have already done the CA thing, right? EA Yeah. के बाद you can do CMA also later. I don't think so. दोनों qualification also if you do, it's a good advantage only. But if you are financially strong, then I would suggest CPA for sure. But if it's not Okay. the case, I think you can start off with EA first and then go for CMA. I'll tell you two reasons. Why do you go that? Okay. EA doesn't have accounting subjects and CMA doesn't have US tax subjects. So CMA plus EA has the ability to defeat CPA. So that's the combination of EA and CMA both. So Okay. CMA के पास taxation नहीं है, EA के पास accounting नहीं है, and if you club both of them, you become a CPA kind of material in the market. क्योंकि what happens is, if I want to place any EA, normally they also see if he has some accounting experience as well. So your CMA would be extremely beneficial, Vamshi. So I would strongly suggest to go for both, but start off with EA, pass that, will place you, then go for CMA also. That's how should be your strategy, Vamshi. Okay. Okay, sir. Thank And you, I'm sir. hoping that here you will do your best because these are very easy exams. I don't want you to fail again, Vamshi. So start taking it Yeah. seriously. Start studying Yeah. daily 2 to 3 hours mandatorily. You don't want to Hmm. do the mistakes what you have done in C and again fail here also because that would be like complete dream breaker for you. Okay. So please Okay. ensure that you're very serious going forward. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Abhishek Jha, please go ahead. Abhishek Jha or Rahul Kaushal. I think we have covered Rahul Kaushal. Hello. Good evening, sir. Yeah, Abhishek, go ahead. Sir, I am very new on this session because from last 2 months I am researching on USCMA and FRM and all these things. So I don't know, sir, how to start this course and what will happen. So it will be great if you'll guide me What about will this. happen क्या अभिषेक तुम कोई शराब तो पी नहीं रहे हो कि आपको कुछ हो जाएगा अभिषेक यू आर जस्ट स्टडिंग राइट हैपन तो कुछ Yes, होने sir. वाला नहीं है अच्छा ही होने वाला है so whatever Acha, it sir. is happening will be good only for you okay Okay, sir. and second Sir, coming to your question FRM we don't train but that's a terrific qualification there is no doubt about it it depends where your interest is it in risk yes. management treasury or is it in accounting management and audit Abhishek so I want to hear from you what interests you is it accounting audit tax management or risk management सर द थिंग इज आई विल नॉट लाई टू यू मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर मेरे को ना अभी पूरा कंफ्यूजन है मेरे को अभी ये चीज पता नहीं है जस्ट टू गेट अ गुड जॉब आई एम लुकिंग फॉर दैट कोर्स अच्छा तो जॉब के लिए पढ़ रहे हो मतलब हाँ सर अच्छा ऐसा ऐसा है ठीक है सो आई थिंक देखो जॉब के लिए पढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी क्वालिफिकेशन में वो एबिलिटी नहीं है अभिषेक टू प्लेस यू हाँ हाँ गारंटीड सर कि यू भाई जॉब मिल जाएगा बोल के राइट सो व्हाट वी बिल्कुल कैन डू इज बिल्कुल डेफिनेटली वी हेल्प इन प्लेसमेंट एंड टू एंड एंड ऑल एक चीज है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास होते हैं सीपीएससी में ये वी प्लेस देम वो तो कोई भी एल्यूमना अनप्लेस तो रहा नहीं है अगर रहते हैं तो वो बिकॉज ऑफ हाँ द लोकेशन थिंग्स दैट्स ऑल तो जॉब तो हम हाँ लोग हाँ एंड टू एंड हेल्प करते हैं बट अगेन वी डोंट गिव एनी गारंटीज एज सच बट अगर जॉब के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो सीपीए स्टैंड्स आउट देन ईए देन सीएमए दैट इज हाउ द रैंकिंग्स आर सो अगर सर आप मैं देख लो अकाउंट इज नॉट गुड मतलब मेरा अकाउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे को तो देन 12th में यूएस बैक सीएमए इज बेटर बट आपको उसके साथ ईए को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आप सीपीए को बीट कर सको मार्केट में समझ में आ रहा है अच्छा अभिषेक तो अच्छा आपको अच्छा यूएस सीएमए पहले करना पड़ेगा फिर आप ईए कर सकते हो तो दोनों इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू अच्छा अच्छा
CMA is a very good qualification, and I think you're a graduate, if I'm not wrong, right? No, sir, I'm pursuing. I'm in the final year, sir. हाँ तो बीकॉम फाइनल ईयर देन तो यू कैन इजीली डू यूएस सीएमए. कहाँ से कर रहे हो फाइनल ईयर बीकॉम का? सर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी. हाँ बस ठीक है, आप चैट विंडो में आपका नाम नंबर डाल दो तो द टीम विल टॉक टू यू एंड कॉन्टैक्ट हाँ, यू. मेरे को ना वो एक मैम से बात हो रहा था, उन्होंने बोला ये ज्वाइन करने के लिए. अच्छा ओके. कौन है मैडम एक्चुअली? आई डोंट नो द नेम. ओके, तो मैडम ने शायद एक बार ही बात किया है क्या, इसलिए नाम याद नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, ओके. नहीं ठीक है, मेरा नाम याद रहेगा नहीं रहेगा? अभिषेक, अभिषेक मेरा नाम हेलो. याद रहेगा नहीं रहेगा? We हाँ aren't हाँ able to सर. hear. हाँ चलो भाई, याद है तो फिर ठीक है. बिकॉज क्या है, आगे जाके पढ़ना बहुत है अभिषेक. सो योर इंटेलेक्ट विल बी वेरी हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रिमेम्बरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज Yes, इंश्योर sir. दैट you're studying every day, like I said, 2 to 3 hours mandatorily. So that is for sure, because ये क्वालिफिकेशन भी कोई इजी नहीं है अभिषेक. आर यू गेटिंग इट? बट हाँ ये है कि हाँ. पढ़ाई थोड़ी Yes, कम sir. रहेगी, कंटेंट कम है. सो सीएमए के सिर्फ तो आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं दूसरे क्वालिफिकेशन में करते हैं, बिकॉज द कंटेंट इज लेस. So that's why the Okay. burden to learn is lesser. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Abhishek. Cool. Thank you, sir. Thank you. Vinay Sagar Reddy, please go ahead. Vinay Sagar. Can we unmute Vinay Sagar there? Yeah, hi sir. Yes, yes. Yes, go ahead, Vinay. I actually actually have two seasons of experience in US taxation, sir. And at present, I am working in bookkeeping. After Okay. some kind of personal issues, I I couldn't study the US CMA. Actually, I read. I'm a ex student of Simandhar. Okay. At present, I'm working as a US bookkeeping. I'm a little bit confused about which one is to better to choose. It's enrolled agent or USCA. So if you're into bookkeeping and US tax, right, it's more of an accounting firm. So enroll agent is a better choice, I would say, Vinay, because you're already in the job of US firm. So go for EA is what my choice would be. Or CMA also start studying parallelly. I don't think so. That's an issue. You shouldn't stop. Try talking to the Simandhar staff and extend the access again. And do both the qualification is my view. Okay. Yeah, sir. But I felt like little bit. I just want to share my view. Like bookkeeping is. I felt bookkeeping is little bit more than US taxation because I worked for both of them. Uh, I'm in a little confusion. Which one is That's better? what I'm telling you. Go for EA because bookkeeping anyway will get automated because you said it's boring, no? So all the Yeah, boring things will first get automated by AI. So I don't think so that's a big problem at all. So you can go up with US tax because that's fundamental work, right? It's very difficult to automate. And that's why it's a recession-free course. So enroll agent, if you see the way it's a AI-proof, recession-proof course. So I'd strongly recommend that you go for it. Okay? yeah. Is it better to go into? I mean, is it better to continue in my job or it's better to go into US taxes No from need again? to leave the job, Baba. The market is very bad and very pathetic. So don't even dare to leave the job. So just stay, whatever experience is there, just keep taking that. Because the world will now belong to a lot of experienced people more, right? So do not leave that. I would strongly recommend you to continue with what you're doing. Okay. And But don't put in resume bore. Put in resume all interesting bookkeeping analytics. From ChatGPT, use some 3-4 lines and write like you're doing a lot of analytics and all. If you tell the recruiter also it's very boring, means he will immediately take you out. Okay. no, I won't. I won't keep those things, sir. Yes, that is what it is, Vinay. Okay. Thank you. Yeah. Go for EA. You can drop down your number also to the team. I think they'll contact you. Okay. Yeah, Anisha Anil, please go ahead. Anisha Anil and Rahul Kaushal, they aren't able to talk, is what we are hearing, Venki. So can we unmute Anisha there? Sir, Yes, Anisha, now you are audible. Please go ahead. sir, my mic was not working back then. Sir, That's I have perfectly done. fine, Anisha. First attempt is Yeah. always okay. Go Yeah, ahead. sir, I did my master in commerce last year in August 2024. Okay. So as of now, I have got a year gap. Um,
I'm thinking to pursue CPA, but then my surrounding people haven't heard about CPA, so they asked me to do ACCA first and then go for CPA. But with lack of interest, when I enrolled in ACCA, I wasn't able to clear one paper, and my mind was really disturbed. And then I had to drop back. Now I have a year of gap, and also I wasn't able to clear ACCA. So now I'm confused whether I should pursue enroll agent first and then go for USCPA, or or should I get into a job and then pursue CPA side by side? I don't know what I'm supposed to do right now. So Anisha, did you do some research about CPA or what is it? Sir, I have done keen research ever since I graduated from MCOM last year. Then again you will hear to your neighbor. He will tell I didn't hear about CPA. Again you will not do. Then what should we do? Should we listen to neighbor or should we listen to our own research? What do you think is the right thing? I think we should listen to ourselves, sir. Exactly. That's what you learned a Yeah. lesson in your life, right? Now never listen Yes. to neighbors. So Yeah. even if you pass or fail, their job is only to talk because whatever they see outside, they will follow the same. That's not the Mm. case, right? If that's Yeah, the but case, then that's a completely different story. So and I also think like since I have a year gap, I think I have lost my fundamentals in accounting and taxation. So I don't know whether I would be able to cope up with Fine, FAR that's or why we have basics of accounting classes. And yeah, whenever sir. you have a what do you say break like that, or if you're a non-accounting background, or if you're Mm-hmm. too much of experience, we always Mm-hmm. recommend them to start with basics of accounting classes first. Yeah, So I sir. think that's what should be your strategy to go with basics of accounting first, and then Mm-hmm. kind of start off with CPA prep and all. But any day CPA. So I am a CPA, Anisha. Right? Okay, So you sir. can understand. Mm. अभी तो आप neighbor पे trust करोगे या मेरे पे trust करोगे बताओ अनिशा. You'll I trust mean, me, I right? should So I trust you. have to work with Infosys, EY, you have Mm-hmm. LinkedIn, you have so many alumni. You can go on my website and check so many people we have placed. You might have heard in this webinar also Yeah. so many people like Khushbu's name. She was one of the friend of one of the students. So there are a lot of alumni who have got placed after doing CPA. End of the day, Yes. it's a US chartered accountant. Sir, Mm. why is like that? Then ACCA is so popular. See, the problem is Anisha, ACCA has integrated in all the universities. So that's why Yes, sir. people are Yeah. aware about it. US का Yeah. problem ये है because CPA requires graduation as mandatory, so people will not hear about it because it's not introduced at the university level. That's Yes, why the sir. awareness about CPA is less. That's why your Yes. neighbors also didn't know about it. But And if you also ask people about have a working conception. professionals, Yeah. lot Yeah. of them will know about CPA. But if you ask non-working people, no one will hear about CPA. They'll hear about ACCA more because ACCA is at university level. Okay. Yes, sir. I'm also thinking like I'm 24 years of age. So will I be able to get a job even if Even like if you're 52-year-old, na Anisha, after 30 years also, if you pass, I will place you. That's my guarantee. Okay. okay, sir. I hope this clarifies, right? 30 साल तो नहीं लगेंगे अनिशा आपको. Yeah. ठीक है. Thank you, Anisha. Thanks a lot. Yeah. You can put down your number there. I think the team is there. They can talk to you as well. I Yeah, don't know sir. if you're Okay. already talking to someone from our team or how's it. Yeah, I had the opportunity to talk to one of your representatives. What's her name? Sandhya. Sandhya. Okay. I had talked to her before. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Anisha. I hope the counseling was up to the mark, right? Or how was it? Yes, sir. Yes, sir. It was really good. Thank you. Thank you. Thank you for the feedback. Thank you so much. Yeah, Rahul Kaushal, please go ahead. I think Rahul, finally you're unmuted, and Rahul will be our last person because if Good this evening, sir. continues, it will go on for entire night. So I think we have already Good covered evening, two and sir. a half hours now. Thank you, sir. Yeah, Rahul, please go ahead. Sir, actually, sir, currently I am working in ICICI Bank, sir. Sales में सर अभी मैं काम कर रहा हूँ सर 2 साल से. सर मेरा कंसर्न ये था सर कि मैं CIA कोर्स के रिगार्डिंग में देख रहा था सर. CIA कोर्स के बारे में मेरे को सर एक बार ये जानकारी लेनी थी सर कि मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं स्विच करना सर मेरे को. नहीं नहीं, बट व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? कर क्या रहे हो आईसीआईसी बैंक में? अभी सर मैं लोन डिपार्टमेंट में हूँ सर. लोन डिपार्टमेंट में? तो लोन डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं अपन? अभी सर KCC डिपार्टमेंट है सर मेरा. ऑपरेशन टीम में हूँ सर मैं. ओके ओके ठीक है. तो आई थिंक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हो तो आप यूएससी में या सीपीए कर सकते हो ना. व्हाई डू यू वांट टू डू सीआईए? मतलब आप इंटरनल ऑडिट देख रहे हो क्या है? मतलब व्हाट इज द नहीं नहीं रेलेवेंट नहीं, देख एक्सपीरियंस? नहीं रहा सर. मैं एक्चुअली इसके बारे में देख रहा था कि इस फील्ड में अगर जाना तो मतलब फर्स्ट एज ए फ्रेशर हम कैसे स्विच कर सकते हैं. तो उस टाइम मैंने देखा था कि सिकंदर एजुकेशन के थ्रू ये कोर्सेज अवेलेबल हैं. नहीं तो गुड. आपके हिसाब से जॉब बाकी के सर लिए देख रहे हो ना आपको राहुल?
अगर आप पूरा जॉब के लिए देख रहे हो तो देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सीपीए के लिए जाओ. अगर फाइनेंस इज एन इशू देन सीएमए इज बेटर. फाइनली सीआईए, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं है और अब फिर आप यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब और समथिंग, आई वुड सजेस्ट दैट यू go for CPA or CMA. That would be a good choice, Rahul. Else CIA is also better, but you need to be little careful on CIA कि थोड़ा बहुत 1 साल का इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस रहना चाहिए उसमें. ठीक है ना? जी. So CPA is best या according CPA to और CMA is also good. Even EA is also good, राहुल. आप EA करके आप बिग 4 में जा सकते हो यूएस टैक्स में, राइट? बट क्योंकि आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंटिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक यूएस CMA और CPA शुड बी बेटर बिकॉज दैट रिजोनेट विद द एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव, है ना? Sure, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much, everyone. It was great having you all. And okay, one last question is Bharat Raul. I think we have lost one person there. Bharat, is your hand raised? Unfortunately, yeah, Bharat, please go ahead. Guys, we'll have one last question and I think we should disperse. Bharat Raul, can we unmute Bharat Raul, Venki? Yes, Bharat, go Hello. ahead. Hi, sir. बोलिए Bharat. Yeah. Good evening, sir. How are you? Yeah, I am doing Yes, great, sir. Bharat. How will I Sir, do? yeah, Yeah. yeah. Sir, I was waiting for to have a word with you since आराम last से Bharat, please go ahead. almost Please go 2 hours, sir. ahead. Sorry, Yeah. just sorry to keep you waiting. Sir, Yeah, please go ahead. yeah, and yeah, it's okay, sir. Sir, just I am telling about me, sir. I am almost 40 years old. I'm a CF final. I have completed my CA inter. Currently, I'm working in a US based farm, real estate farm. It's not a farm, it's a company. Okay. And I Okay. have almost 9 years of accounting experience. Okay. And I have enrolled today in Simandhar in a enroll agent. Okay. आपका आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है सर सीएमए कुड बी द बेटर. बट व्हाट आपका इज क्या योर एक्सपीरियंस है ओपिनियन भरत अभी? सजेशन सर? सर अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है, यूएस अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 और साल का कितने सर. साल का 9 एक्सपीरियंस है आपको? 9 प्लस सर. 9 years का ना? यस नहीं सर. ठीक है. व्हाट आई एम टेलिंग इज भरत जी, इट्स गुड टू हैव टैक्स एंड अकाउंटिंग बोथ. इसलिए मैं सबको जिन को सीएमए रेकमेंड कर रहा हूँ ना भरत जी, आई एम ऑल्सो टेलिंग देम टू हैव ईए ऑल्सो. क्योंकि अगर आप यूएस टैक्स में भी जाते हो तो अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है. अगर आप अकाउंटिंग में हो तो टैक्स का एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज मैंडेटरी. आप ईए करने के बाद सीएमए कर लेना. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम भरत जी. बट दोनों का बोथ द क्वालिफिकेशंस combination is like a killer. That is what I would say. And I've been telling the same throughout my session. E and CMA combo will beat CPA at any day. Okay. Sir, actually, why I'm telling this one, sir, abhi, if you don't mind, I'm just telling my, salary. Okay, I'm now almost drawing 14, 20 plus, sorry, 12 plus. Okay. Sir, अगर से मैं ये करूँगा, तो do you think I'll get some additional on that? Means, am I like that? You will not get actually. See, Okay, what you sir. will get is you'll get the right profile. That is what is more important, right? तो आपने को प्रोफाइल Okay. इजीली मिल जाएगा. बाद में वहां शिफ्ट करने का हम लोग देख सकते हैं. So that's not a problem. So money is not something which you can't recoup or something, right? So वो तो रहेगा, बट एक सीए में ये कराएगा तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है भरत जी. दैट इज द ओनली थिंग, राइट? तो क्रेडिबिलिटी Okay. बढ़ गई तो Okay. मजा आ जाता है. दैट्स द ओनली थिंग इज व्हाट आई एम थिंकिंग. ओके. Okay. Okay. क्योंकि सर मेरा अभी जो कंपनी में मैं अभी हूँ, वहाँ पे ये की रिक्वायरमेंट बहुत है. ठीक है. Even my MD suggests me to go for Then EA. तो यार ये Okay. makes sense ना. Then तो I don't think so that's a problem. Which company you're working, Bharat? Sir, it's Enhancer Services Private Limited. It's in Pune. What's can you spell that? Enhancer, ENHANCOR, Enhancer Services Private Limited. It's a new company. Just Okay. In 2023 August, it's incorporated. Okay. Yeah. Okay. Okay. So yeah, नहीं ठीक है. I don't think so. अगर I'll कंपनी go for खुद EA and then yes, later you can go because company itself is promoting that, right? So I don't think so that's a problem yeah. at all. Okay. और है क्या, Okay. कंपनी से रिइंबर्समेंट भी ले लेना. स्पॉन्सर तो करते ही है वो लोग. ठीक है. नहीं सर, स्पॉन्सरशिप नहीं करते. कंपनी का क्या है, कंपनी बोले अगर आप EA के बाद इफ यू गो फॉर US CPA देन विल स्पॉन्सर दैट, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन सर. शायद
they need minimum 3 years of guarantee that Okay. they might go for that signing the documents, all this stuff. नहीं नहीं ठीक है. I think good. आप अपना number भी एक बार दे देना. So I think it's Okay. possibly if we can do some tie-up or something also, and I can talk to the company also, it will be good. So it's a good thing to kind of have that, right? So that should be Yeah. helpful for us. Okay. ओके सर, मैं अभी बोल रहा था कि सर अगर मैं जो ये अभी ये पहले अगर यूएस सीएमए करके उसके बाद ये में जाऊं तो चलेगा क्या? नहीं, आप ये पे ही रहिए क्योंकि कंपनी itself is mandating that and there are requirements also, right? So stick to ये only, Yes. and then we'll do for Yeah. CPA later. Okay, ठीक है, cool. Yeah. Yes. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Bharat. Thanks a lot. Thank you, everyone. Yeah. It was great talking to you all. I'm there on LinkedIn. Please connect with us. Keep following us on social media like Instagram and YouTube. It would be great to listen to you all, everyone. And yeah, always ready to help. Any questions, anything, please feel free out. And like I said, today's offer, who all get enrolled, will have the personal mentoring. Please ensure that you have attended the webinar and also give the evidence of you attending that. So without that evidence, we will not take it ahead. Okay. Thank you, everyone. Thanks a lot.